भी भंगारम लाने की कोशिश पोर्ट में कर रहे हैं, ताकि वहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के क्लस्टर्स तैयार करेंगे और वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग करके जो सर्कुलेशन इकोनॉमी है वो भी हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ, एक बहुत बड़े व्यंग्य हास्य व्यंग्य कवि है, मेरे घर पर गाड़ी लेके आए तो मुझे बोले ये मेरी गाड़ी पुरानी हो गई 15 साल से, पर कितनी अच्छी है। मेरे घर पर गाड़ी लेके आए, स्क्रैप करो। तो मुझे बोले ये मेरी 70 साल की उम्र है, कल तुम कहोगे कि उसको भी स्क्रैप करो। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर अब गाड़ियों के बारे में इसको फिटनेस सर्टिफिकेट ले लो। तो स्वाभाविक रूप से आपके पास जो पुरानी है, जैसे आज की एक ट्रक जो 3 ट्रक जितना एवरेज देती है फ्यूल में, उसने फ्यूल में 1 ट्रक पुराना देता है। अभी स्कूटर में मुझे याद है, मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने स्कूटर ली, तो मैं सबको बताता मेरे गाड़ी का एवरेज 32 किलोमीटर है। आज 2 व्हीलर का एवरेज 80 किलोमीटर है। तो क्या होता है, समय के साथ टेक्नोलॉजी भी बदलती है। थोड़ा थोड़ा लोगों ने भी अब पुराना व्हीकल चलाने में, प्रदूषण तो होता ही है, पर फ्यूल के हिसाब से उसकी कॉस्ट कितनी है, और नया व्हीकल और वो भी इलेक्ट्रिक का करेंगे उसकी कॉस्ट कितनी है, इसका अगर अध्ययन किया करेंगे तो निश्चित में फायदा होगा। आपके एक योजना हम कर रहे हैं जी कि मैन्युफैक्चरर की मीटिंग बुला रहा हूँ मैं। वो रहता था ना, पुराना फोन दे दो नया फोन खरीदी करो, तो मैं उनको कह रहा हूँ कि पुरानी गाड़ी ले लो, नई गाड़ी में इतना कंसेशन मिलेगा, ले जाओ। ऐसी स्कीम भी मैं उनको, इसलिए तो मैंने कहा आप कार कन्वर्जन करवा रहे हैं। आपके बड़े पसंदीदा लेखक और व्यंग्यकार थे शरद जोशी, जिनका जिक्र आप भी करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत पढ़ता हूँ। तो शरद जोशी जी ने जीप पर सवार इल्लियाँ लिखा था, तो ईवी पे इल्लियाँ तो सवार नहीं होंगी। इल्लियों से मतलब ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो इन पॉलिसीज़ को जिनको आप गिना रहे हैं, ये कंटिन्यूएशन में चलती रहें, वो धीमी ना हो। देखो, मैं जब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो 5 करोड़ थे, और धीरूभाई अंबानी का जो टेंडर उस समय 3600 करोड़ का, यानी आज के 40,000 करोड़ का, मैंने रिजेक्ट किया था। धीरूभाई भी नाराज हुए थे, बहुत लोगों में कंट्रोवर्सी हुई थी, और मेरे पास 5 करोड़ थे, और मैं पूना में गया था पत्रकारों के सामने। आप जानते हो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है करदड़ी करके इंडियन एक्सप्रेस के, तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि ये रोड कब पूरा करोगे? 2 साल में। कितने पैसे लगेंगे? मैंने कहा 1800 करोड़। बोले 3600 करोड़ 3400 करोड़ रिलायंस का टेंडर है और आप बोलते हैं 1600 करोड़। बोला हाँ। 1800 करोड़? हाँ। बोले आपके पास पैसे कितने हैं? मैंने कहा 5 करोड़। वो जोरदार हंसे और बोले आप राजनीतिक नेता के हमको बेवकूफ़ समझते हैं कि आपने कुछ भी बोलना चाहिए और हमने लिखना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? बोला नहीं। बोला आपके पास क्या है? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया था। मैंने कहा इफ देयर इज अ व्हील देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो व्हील देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। मैं किसी ब्यूरोक्रेसी को क्लेम नहीं करना है, उनको दोष नहीं देता। इट इज माई ड्यूटी। और मुझे बाला साहब ठाकरे ने एक बार एक एक्रेलिक शीट पर एक वाक्य लिख कर दिया था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। बोले नितिन याद रखना ही है। तो मैं वो याद रखता हूँ, मैं कहता हूँ आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ जो भी करना है डिसीजन करो। और आज मेरे डिपार्टमेंट में कोई डिले करता नहीं, और डिले किया तो मेरी गालियां खाता है, मैं छोड़ता नहीं उसको। लेकिन सर हम सड़कों की बात कर रहे हैं, वाहनों की बात कर रहे हैं। एक दुखद पहलू भी है कि वाहनों के एक्सीडेंट्स का जो सिलसिला है वो अभी भी एक दुखद पहलू बना हुआ है। एक्सीडेंट्स का रेट हमारे यहाँ अभी भी बहुत हाई है। आपने बहुत कोशिश की और मैं जानता हूँ कि ये विषय आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन इसको लेकर क्या कोई नया पॉलिसी इनिशिएटिव आप सोच रहे हैं कि इस पर ब्रेक लगे? क्योंकि हाईवेज बन रहे हैं, सुपर एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, गाड़ियों की रफ्तार बढ़ रही है। देखिए, ये जितने विषय आपने पूछे उसके सब जवाब मैंने पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ दिए, पर ये सब्जेक्ट है, इसमें मैं फेल हुआ हूँ, अभी तक यशस्वी नहीं हुआ हूँ। करीब देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और 18 से 34 वयोगुट के 60% युवा मरते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर आपको कबूल करते हुए या मैं दोषी हूँ उसके लिए कि मुझे सफलता नहीं मिल पाई। बहुत कम। मैंने तय किया था कि 24 एंड के पहले 50% डेथ्स और एक्सीडेंट कम करेंगे। इसके 5 कारण हैं।
पहला ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इतने सुधार किए, अब स्टार रेटिंग लाया है, तो आप हर चीज़ को अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का व्हीकल, स्कूटर सब बनेगा। रोड इंजीनियरिंग में इतने बदलाव किए, इतने ब्लैक स्पॉट किए, 40,000 करोड़ खर्चा किए और भी कर रहे हैं। फिर तीसरी बात है इन्फोर्समेंट। अब मैंने इतने फाइन बढ़ा दिए मोटर व्हीकल एक्ट को बनाकर कि लोग मुझे चिल्ला दे कि देखो कितना फाइन दे रहे हो। मैंने भी मुंबई में फाइन भरा गाड़ी पर, क्योंकि वो कैमरे में आता है और फाइन होता है, तो फाइन भी बढ़ा दिया। इन्फोर्समेंट के साथ इमरजेंसी ने लोगों को एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना, उसमें भी हम एम्बुलेंस से वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन, ह्यूमन बिहेवियर। रोड पे चलते समय, स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। मोबाइल पर बात करते हुए स्कूटर या कार नहीं चलानी चाहिए। अभी मेरे गाड़ी में एक व्यवस्था थी, अभी हम बैठे 5 लोग, तो सामने मैंने बेल्ट लगाया, ड्राइवर ने लगाया, फिर भी आवाज़ आ रहा था ट्याव 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 ट्याव, तो मैंने पीछे वाले बैठे हुए, तुम बेल्ट लगाओ पहले। अभी हमने वो भी मैंडेटरी किया कि पीछे भी बेल्ट लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन बिहेवियर इज द बिग प्रॉब्लम। रेड सिग्नल लिखा तो रुकना चाहिए। अभी ये दिल्ली मेरठ हाईवे पर 6 लोग मर गए, तो एक स्कूल बस खाली, ड्राइवर रॉन्ग साइड जा रहा था। और मैं आपको बताता हूँ, मुझे दुख होता है, अनेक बार मैं अपना कैनवा रोक के पकड़ता हूँ उसको और डांटता हूँ। इतने लोग मुझे, स्कूटर वाले, गाड़ी वाले, वन वे वायोलेशन करके जाते हैं। वो अक्षय कुमार ने हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट की थी, बहुत सुंदर थी। एक मुंबई में वो ट्रैफिक पुलिस के रूप में अक्षय कुमार था, और वो लोकमान्य तिलक मार्ग था। तो एक आदमी आता है तो उसको रोकता है वो ट्रैफिक वाला, अरे नमस्कार, आप तो तिलक जी के नाती लगते हो। तो बोले नहीं, तो बोले ये वन वे है तो इसमें रॉन्ग साइड क्यों जा रहे हो, तुम्हारे बाप का रोल है कि ये कि तुम यहाँ से जा रहे हो। तब वो संकोच करता है और पीछे हटता है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, और इसको जगाना पड़ेगा, इसमें आपका सहयोग चाहिए। बहुत मीडिया वालों ने बहुत कार्यक्रम किए, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, मैं काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को लेके करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, रोड सेफ्टी काउंसिल बनाई है, बच्चों के कार्यक्रम कर रहे हैं। पर लोगों का ह्यूमन बिहेवियर बदलना, कानून के प्रति मैं कानून का पालन करूँगा, इसके बारे में कठोरता से एक स्वभाव बनाना, ये केवल सरकार नहीं कर सकती। एजुकेशन में हमने उसके सिलेबस लाए, अब अलग अलग प्रकार के बहुत इनिशिएटिव लिए, कंपनियों ने किए, आप भी सहयोग करिए। जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, माइंड सेटअप नहीं बदलेगा कि मैं कानून का पालन करूंगा, मैं वायोलेशन नहीं करूंगा। लाइसेंस, अब मैंने 17 ऐसे डिजिटल चेंजेस किए कि पहले मैं पूछना नहीं चाहता ही लोगों को, इनको पूछा मैंने कि कितने लोग ऐसे जो आरटीओ में जाके जिन्होंने टेस्ट दी और बाद में लाइसेंस लिया। जवाब नहीं दे सकते क्योंकि घर बैठे लाइसेंस आते थे। अभी अमेरिका में मैं गया था, मेरी लड़की अमेरिका में थी माइक्रोसॉफ्ट में, वो मुझे बता रही थी कि मेरी परीक्षा है। बोला, काहे की परीक्षा है? बोले 1 महीने से मैं इतना बड़ा किताब पढ़ रही थी, बोले मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। यहाँ तो बस सुबह गए, दोपहर, पत्रकार होगा तो जल्दी मिल जाता है। नहीं सर, मैंने टेस्ट दे के लिया है। अभी क्या अपने बारे में तो मैं कह सकता हूँ सर, आपके लिए ठीक है, पर मुझे बहुत मालूम है लोग, मैं किसी को इम्प्रोसिंग कुछ में नहीं जाता। आरटीओ में लाइसेंस कैसे, अभी क्या ये डिजिटल लॉकर खोल दिया हमने, अभी लाइसेंस के लिए नियम बना दिए, सिस्टम डिजिटल कर दी। ड्राइविंग स्कूल, देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। मैं आपको, मेरे डिपार्टमेंट में हेवी मशीनरी यूज होती है कंस्ट्रक्शन में, मैं कॉन्ट्रैक्टर को पूछता हूँ कि तुम्हारे यहाँ जो लोग ट्रेन होके, इनको ट्रेनिंग किसने दिया? नीचे मुंडी करके खड़े रहते हैं, क्योंकि वो जो कंडक्टर होता है वही ड्राइवर बन जाता है, वही ट्रेनिंग करता है वहाँ। व्यवस्था में अब हमको इसमें कोशिश करनी पड़ेगी। प्रशिक्षण की व्यवस्था, डिजिटल, ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री सिस्टम। अब आरटीओ का परमिट आप घर से इंटरनेट में अप्लाई करो, आपको मिलता है। आरटीओ ऑफिसर को अगर सपने में उठाकर बोला कि किसी को ठोकना है, तो पहले बोलेंगे नितिन गडकरी को पीटो, क्योंकि मैं आरटीओ ऑफिसर को बहुत नाराज कर चुका। पूरे सिस्टम को मैंने डिजिटलाइज किया, अब लोग जाते ही नहीं आरटीओ में। पर अब धीरे धीरे सिस्टम को भी अच्छा करना। अच्छा नितिन जी, एक बात बताइए, आप इतने सारे कामों पे आपने इतने सवालों के जवाब भी दिए। नितिन गडकरी का ट्रांसपोर्ट सीन ऑफ इंडिया या जो अमृतकाल है, नितिन गडकरी का ड्रीम क्या है? देखो, पहला ड्रीम तो है कि हमारे हवाई जहाज ये बायो एविएशन फ्यूल पे, टाटा का विस्तारा का भी जो प्राज कंपनी है उन्होंने तैयार किए हुए बायो फ्यूल पर, वो भी 50% पे गया। तो पहली बात, बायो एविएशन फ्यूल का निर्माण हो।
और एम्फीबियस सी प्लेन जो एयर स्ट्रिप पे भी उतरते हैं और पानी पे होते, वो बायो एविएशन फ्यूल पर देश में आए और हर गांव का तालाब, हर गांव का डैम ये रिवर पोर्ट बने और वहाँ लोग उतरे। और तीसरी बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कंफर्टेबल लग्जरियस हो और डीजल की तुलना में 30% रेट कम हो तो लोग इलेक्ट्रिक बस में प्रवास करें। और चौथी बात, मैं 260 रोपवे केबल कार फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ जो पहाड़ पे ऐसा ऐसा ऊपर जाते हैं, इसके बजाय ऊपर के ऊपर जाएंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर इलेक्ट्रिसिटी पे आएगा तो प्रदूषण कम होगा और धीरे धीरे इस देश का किसान इस देश का फ्यूल तैयार करेगा। मैं भी किसान हूँ, 3 चीनी मिलें चलाता हूँ और इथेनॉल से लेकर हाइड्रोजन तक सब पे मैं काफ़ी खुद भी काम करता हूँ। तो मेरा विश्वास है कि ऐसा दिन आएगा कि 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम होगा। ये कठिन है, सब कुछ किया, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, तो भी कठिनाइयाँ है। पर इन सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये जिस दिन होगा उस दिन हमारी इकोनॉमी बहुत ताकतवान बनेगी, नए रोजगार निर्माण होंगे और किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। चलिए, आपने तमाम चीज़ें हमसे साझा की, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी, आप हमारे साथ यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। I would request Gadkari ji to please stay on the stage, and thank you, Pranay, for holding that very interesting conversation. There were big takeaways coming out of that conversation. I would now request Shri Gadkari ji to please stay on the stage, please. I would request Mr. Vijay Kapoor, founder Syra Electric, Mr. Rahul Maggo, founder eVizon, and Pankaj Agarwal, Vice Chairman, GL Bajaj Institute of Technology, to please come up on the stage. And I would request Shri Nitin Gadkari ji to give a token of appreciation for the exemplary work in the EV sector. Can we have all of you on the stage, please? And a round of applause for all of them, ladies and gentlemen. I would also take this moment to highlight the phenomenal work that they have done in the EV segment by helping usher Shri Gadkari ji's dreams of electric vehicles in India. Well, Mr. Vijay Kapoor, founder of Syra Electric Auto Private Limited, also very fondly known as the father of e-rickshaw, has a legacy of almost 4 decades in creating components for automotive industries in India. Meanwhile, Mr. Rahul Maggo is the visionary founder and driving force behind eVizon. With a passion of automobile and cutting-edge technology, he aspires to revolutionize the transportation industry and pave the way towards a greener future. Can we have a round of applause for them? And Mr. Pankaj Agarwal, Vice Chairman, GL Bajaj Institute of Technology, is a young and a visionary leader. He has been awarded with 4 top rankers, excellence awards, and he has also been honored for excellent leadership of leading institutes in India. Thank you, Gadkari ji, for being with us today and bestowing us with your presence. A round of applause for our chief guest, Shri Nitin Gadkari ji. Ladies and gentlemen, before we move ahead with our conclave, we take this opportunity to thank our sponsors, co-presented by Syra Electric and Servacon, powered by Bigos, mobility partner eVizon, and also our Zoo Electric Vehicles, logistics partner APML, and knowledge partner GL Bajaj.
Ladies and gentlemen, our first panel discussion today will delve upon the rise of e-scooters and e-bikes in India and how it is transforming the urban mobility in India. Before we commence our first session, I have some data to share with you. From 4.05% in 2022, the adoption rate of these vehicles rose by third this year to touch 5.60% in May. Not only this, India now stands at, it has seen a 120% growth in electric vehicles in the second quarter of this year. And these numbers are a testament of India's growing EV industry. Ladies and gentlemen, our first panel discussion will delve into this very topic, transforming urban mobility in India. And to discuss this, I would like to call on stage our esteemed set of panelists and moderator on the stage. Can we have a round of applause for Mr. Manav Sethi, Head of Martech and Growth, Hero Vida Electric Scooter Hero Motorcorp. Can we have Mr. Manav Sethi on the stage, please? And a round of applause for Mr. Manav Sethi as well. Now, with his career spanning over, I would request everyone to please settle down. We are starting with the first panel discussion of our conclave today. Now, Mr. Manav Sethi, with his career spanning over 2 decades, Mr. Manav is also the growing driver for the company's EV business in India and also globally. Well, we also have with us Mr. Suhas Rajkumar, founder and CEO, Simple Energy. Mr. Rajkumar has specialized in architecture and has used his learning in building an EV scooter with a range of 280 kilometers. Can we have a round of applause for Mr. Rajkumar, ladies and gentlemen? We would also like to welcome Mr. Rahul Maggo, founder of Evazon. He's the visionary founder and driving force behind Evazon. A round of applause for Mr. Maggo, ladies and gentlemen. We also have with us Hemant Kabra, founder and MD Bigos. Mr. Kabra started his career in 2010 and has been associated with RR Global for a decade. And the session will be moderated by Dinesh Sharma, technology editor, Zee Media. A very good evening, everyone. Thank you so much for coming here today. As we all know that in the recent years, the urban mobility transformation has seen rapid change thanks to these e-scooters that have changed the dimensions of urban mobility. And that's what we want to discuss here today. We want to get into the nitty-gritty of it. What have been the challenges and what's going to be the roadmap. We have an amazing lineup of guests here, starting with Suhas. I want to ask you a very simple question. What got you into this particular space? First of all, thank you for inviting. It was a pleasure meeting at our launch. Answering your question, what got me into e-mobility? I come from a very humble background, just like every middle class out there wants to buy an EV, which is good, which is fast, which is an alternative to an Activa or any other IC counterpart there. So my father just raised a question on a dinner table asking me, where is India's EV story going? Because I don't see a reliable product out there to buy. And I was a bit shocked with the fact that he was not really happy with that. And that triggered a question in my head that, can we do something about it? And that's how the story began of Simple Energy. I want to ask Mr. Hemant, what are the factors that have actually contributed in the rise of the e-scooter market specifically? So I think there are various points which has actually added. If you see EV is there since quite some time, 2008, 2007. But if you see last 3-4 years or 5 years, that has completely moved up. I think the first key reason is the FAME. I think the FAME subsidy by the government is very, very taken up this industry to different level. Having this subsidy on per scooter has made the OEMs to make a good product, which is the right product for the consumer.
and the subsidy has helped us to do that. Second, I think biggest reason is the GST. I think GST of 5%. Usually, if any government gives GST of 5%, that means they are very, very focused and looking forward to that particular industry to grow. So this is one of the second reasons why this has come up. And third, now the products are getting much more mature. Previously, maybe, and it's for any industry, whenever you start growing or building up, but now we see a much more mature product coming to the market. So consumers are also accepting it. Consumers are having a good experience to use a EV two-wheeler or EV any product. So once the consumer are satisfied, they will automatically shift to it. I think these are three major reasons why I think the EV has come up in the last 3-4 years. Mr. Magoo, I want to understand from you, how do e-scooters and e-bikes address the challenges that we get to face every day, especially in the urban, urban cities, the traffic congestion that we get to face here, and of course, pollution is a factor, needless to say. So how e-scooters and e-bikes are solving this issue? As e-scooter and e-bike is like, it is very convenient to drive, and all the delivery partners are right now the business they are doing it from the cycle or from the fuel, like from the bike, fuel bike. Now they are like focusing, Zomato is also focusing on shifting to its delivery partner towards electric scooters and electric bike. And the biggest factor is like pollution in the market, and government needs it to be like come down the pollution level. Suhas, last time when we met, I observed one thing, that you were speaking a very fluent and a very amazing Hindi. So my question to you would be in Hindi now. मुझे आप एक चीज़ बताइए. Of course, आपने एक नया स्कूटर, हाई परफॉर्मेंस स्कूटर को लॉन्च किया था, सिंपल वन उसका नाम रखा था. एक चैलेंज होता है एक स्कूटर को लॉन्च करना, लेकिन उसके बाद जो एंड कंज्यूमर है वो जो चैलेंजेस फेस करता है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंज एंग्जाइटी, उसको एड्रेस करने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, और ये पूरा सेक्टर इन टोटल कैसे इन चैलेंजेस को एड्रेस कर रहा है? पहली बात तो अगर आप रेंज एंजाइटी और चार्जिंग इंफ्रा, ये दो अलग मुद्दे हैं, ठीक है. रेंज एंजाइटी बहुत सारी चीज़ों में है, जहाँ पे आप देखें कि अगर किसी को एक स्कूटर खरीदना है, 30 किलोमीटर का भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और वो कह रहा है कि मेरा अप एंड डाउन 60 किलोमीटर्स है, तो बहुत सारे स्कूटर्स बिफोर क्वालिटी प्रोडक्ट्स केम इन, वो 40 किलोमीटर भी नहीं कर पाते थे, राइट. उसके वजह से वो रेंज एंजाइटी बढ़ गई है. बट इनफैक्ट if you look at a good scooter, that itself gives you roughly about 50 kilometers of range. So I don't think range anxiety is a big problem today. Charging infrastructure एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन कर सकते हैं. अभी फॉर एग्जांपल सिंपल वन, हम परफॉर्मेंस और रिमूवेबल बैटरी पैक नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दो अलग मुद्दे हैं. अगर आप जब परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो आप रेंज की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने वो कोशिश करी है, जहाँ तक हो सकता है कि सिंपल वन की बात आए तो हमने कोशिश करी कि दोनों चीज़ें करें. लेकिन आई थिंक सबको साथ आना पड़ेगा. एक रिमूवेबल बैटरी पैक टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप एक छोटी बैटरी पैक, जहाँ पे आप चाहे 1.5 या 2 किलोवाट के आसपास की बैटरी पैक्स लगाएं और उसको रिमूवेबल वे में दें, और एक रियलिस्टिक 50 to 60 किलोमीटर का रेंज दें, ताकि आप उस बैटरी पैक को घर लेके जाएं, कहीं पे भी चार्ज कर सकें. तब तक जब तक गवर्नमेंट या फिर हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर सब मिलके एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए एटलीस्ट आई थिंक अराउंड 5 to 6 years और लगेंगे टू हैव अ वेरी प्रोमिनेंट वन. एंड विद दैट वी नीड टू ऑल्सो अग्री ऑन अ सर्टन चार्जिंग प्रोटोकॉल, right? We cannot have different protocols for different companies, which is a big problem, which we have also put forth, right? So I think combination of charging ports or charging protocols with an adoption of a lower variants of a removable battery pack can solve a lot of things. And when we solve this part of the problems, I think range anxiety is nothing but just a hype that is going on. Hemant, when we're talking about high-performance scooters and even the normal scooters, one thing that is there in everyone's mind is about the safety and road safety factors. How can we, address these issues? क्या कोई एक हम कुछ कैंपेन के थ्रू इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, और हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दीज इश्यूज? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और आपने जो बताया कि सेफ्टी बहुत बड़ा चीज़ है, जो हम हर OEM
ध्यान में रख के हम ये चीज़ों को प्रोडक्ट को बनाते हैं। क्योंकि हम जब खुद देखते हैं कि एक व्यक्ति और एक इंसान उसके ऊपर बैठ के चला रहा है, बच्चा चला रहा है, फैमिली चल रही है, सब चल रहा है, तो सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है हर प्रोडक्ट के पीछे। तो उसके पीछे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि जो स्टैंडर्ड्स अगर देखेंगे हमारे लास्ट 1-1.5 साल के अंदर जो स्कूटर्स के या 4 व्हीलर के या 3 व्हीलर के स्टैंडर्ड्स जो बढ़ाए हैं, आई थिंक उसके कारण एक तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो पहले थे वो अलग है, अभी वो बहुत अलग है। दूसरा मेरा एक मानना है कि जितने जल्दी हो सके ये जो लो स्पीड व्हीकल जो हम पास करते हैं एक 25 के स्पीड वाले का, इसके ऊपर बहुत जल्दी सोल्यूशन लाना जरूरी है। अगर ये जब तक नहीं आएगी, ये पूरी इंडस्ट्री को साथ में लेके चलता है। सब लोग क्या देखते हैं, ये ईवी है, राइट? बट आप देखिए ये हाई स्पीड ईवी में स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है, लो स्पीड ईवी के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है। और जब वो एक लो स्पीड में कुछ होता है तो हाई स्पीड को भी उतना ही इम्पैक्ट होता है जितना वो लो स्पीड में होता है। दैट इज माई पॉइंट कि अगर हम ओवरऑल स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट इज एजुकेशन, दैट हाउ टू यूज अ गुड बैटरी, how to charge, what are the basic hygienes to take care of it should be very well educated and known to the people. I think if we do all these things, it is a very simple thing. It is not that difficult to do that process. Mr. Magoo, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और स्कीम्स की अगर हम बात करें, कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है कंपनीज को ईवी स्टार्टअप के अंदर आना, और कितना आपको इससे मदद मिली है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से? As it is providing subsidies to the manufacturer as well as the consumer, it is like very easy for the consumer to get the right product, and government is only subsidizing the product which is made in India. Like it is giving like more business to the India, and it is accelerating the like more production in India in EV, and it is giving benefit to the consumer as well as they are getting the subsidies. It is very good for like India. Suhas, how has been the response from the consumers first of all, and what are your plans to improve your ecosystem now? I think we've been one of the fortunate OEMs out there. 5 years roughly about, we'll complete 5 years on October 15th. We have spent enormous time in R&D. We've been vocal about battery safety, battery performance, localizing things, even the magnetization happening in India. I think we wanted to become a company and put forward a statement saying that we should localize to 100%. Of course, lithium ion is not done in India, so that 100% is still a very distant dream. But I think that has added to what we really believed in, right? And that has got a confidence in the consumers that out there. So we became India's longest range scooter with 212 kilometers that we launched. I think that was spoken 3 years back. Today people are launching about long range scooters and things like that. But we were talking about 3 years back. So I think that has garnered us a lot of interest. We have started deliveries. We've given out a pilot deliveries out there. For past 3 months we've been observing them, and we've not had any major issues yet. So now I think in next 3 months we are scaling to at least 15 cities, and the next 18 months will be around 100 cities in India, and we have a strong order book close to 1 lakh pre-bookings. That is a very strong order book that we are doing. I think Honorable Minister Mr. Nitin Gadkari mentioned that demand is high, production is low. I think we are also very much caught up with that, because supply chain is not really easy to come by. We have a tag timing of roughly about 60-65 days. That tag timing itself is a very problematic thing in the EV industry currently, which everyone is trying to get under 30 days, right? Which will take about 24 months more. I think that working capital flow and any startup for that matter, including us, needs that kind of buffer, right? And that has become a challenge for us in the last 2 years. We have solved it more or less, but I think going forward in next 18 months, EV industry is going to go up very, very largely. I think today we have 5% or 6% market share. I think roughly about in next 2.5 years, we should be about 20%. Hemant, when we are talking about the EV e-scooter market, E2W market here in India, of course, we are right in the middle, but there's so much to grow. There's scope of growing, right? But we also have seen a lot of European markets and probably Western countries जहाँ पे e-scooters की market काफ़ी mature हो चुकी है in terms of battery technology and other technology.
किस टाइप के हम लेसन उनसे लर्न कर सकते हैं और कहाँ पे अभी हम स्टैंड करते हैं और कितना पोटेंशियल दिखता है उसमें? सो आई थिंक पहले तो हर मार्केट बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है. ईवी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेम्परेचर. आज जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की है, उनके टेम्परेचर कभी भी 50-60 तक नहीं, 50-52 तक नहीं जाते हैं. आज इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन रोड्स, इंडियन चीज़ों के यहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं. तो पहले तो आपको आपकी डिज़ाइन उस तरीके से करनी चाहिए, रादर देन लर्निंग फ्रॉम देयर कि ये सेम उठा के यहाँ पे लेके आया, वो नहीं चलेगी. वहाँ के रोड्स बहुत अलग है, यहाँ के रोड्स बहुत अलग है. यहाँ पे हम 2 लोग बैठ के चलाते हैं, वहाँ पे सिंगल राइडर्स है. वहाँ का मार्केट भी है इतना सा, अपने एक सिटी में उतना बड़ा मार्केट पूरा आ जाता है. हम यहाँ पे 4 लोग बैठ के चलाते हैं, वहाँ पे 1 लोग बैठ के चलाते हैं. सो मेरा ये मानना है आज की अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाकई में बहुत मैच्योर है, चाहे एग्जिस्टिंग, और अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई. हमें ईवी के अंदर मैकेनिकल उनसे लेना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल जो पार्ट होते हैं वो हमें बाहर के देशों से बैटरी डिज़ाइन पैक कैसे अच्छी बना सकते हैं ताकि ये थर्मल चैलेंजेस ये सब हम टेक केयर कर सके, वो हमें करनी चाहिए. I think the good part, one more thing which we can learn from there and adopt it here is the policies. उनके standards, उनके safeties, उनके processes, policies wise बहुत अच्छे हैं. I think we should adopt that here and see that how fast we can grow them. Mr. Makhu, I want to understand, आपके हिसाब से ऐसे क्या फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से हमारे देश में ईवी एडॉप्शन काफ़ी रैपिड पेस पे स्टार्ट हो चुकी है, और आपकी कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है और कितना इजी रहा है इसके लिए? People are getting educated now. Like people are right now just adapting what is exactly electric vehicle is, and they are getting to know what are the benefit of using it. Like that is why, and my role in my company is like to educate them, to show them the vision what I've seen in India in the automobile industry. People really need to know more and know about the product, as it is a new product to the market. People doesn't know about the verification of the batteries or the product. They need to know more and educate more. Suhas, you want to add something? Yeah, so I just wanted to add to his point. Well, that is really important for us to, look at other technologies, etc. But I think if you break down EV industry, अगर आप EV industry को break down करें, development को break down करें, आपके पास vehicle engineering है, vehicle integration है, vehicle dynamics और performance है, algo development है, software cloud है, battery technology पे thermal stack हो गया, smart stack हो गया या BMS stack हो गया, और आपके पास motor technology है. आपके पास across 10 verticals हैं जहाँ पे इंडिया बहुत strong है. इंडिया के IITians for example, बहुत सारे लोग जो हमारे टीम में हैं, they have patents at a level where even Mercedes-Benz or Mercedes or BMWs don't have, right? On performance algos, right? India, trust me, on the performance figures, Indian automobiles, including us, right? We clock a 0 to 40 in under 2.5 seconds, right? That in India, no one did. Right? Not in the world also. Even if you look at BMW C02 platforms, they've struggled to give a range at having a 4.5 kilowatt battery packs because they struggle with thermal battery packs, right? Indians have had a boon on the weather that we have, and our engineers have struggled hard on that. So I think we have the stack. We can learn from the people, but I think India can stand up on a strong leg. I'm saying that we can sell technologies now instead of importing technologies. So I think a lot of my peers who have started early have shown the way, and we have learned from them, and we want to be the guys who want to teach the world that how to build a great EV. Okay, so before we wind up this session, I have a common question for each one of you, so I want you to answer one by one. As we all know that India is the largest two-wheeler market in the world, right? Do you think India can also become the largest two-wheeler EV market in the world, and how soon can it be? Absolutely, I think we are growing at 15% per annum on two-wheeler sales, right? I think it will take roughly about 8 to 10 years more for us to become the largest EV player out there, because there are still challenges on supply chain. As I mentioned, that we still need to localize our battery packs, जो हमारे lithium है या फिर sodium है, any other battery pack that comes, LFP also for that matter. Different form factors, different chemistries हैं, performance के लिए अलग, sustainability के अलग, या range के लिए अलग, और safety के लिए अलग. So I think 8 to 10 years, strong government policies, clear-cut focus of private players and public players. I think we should achieve that in 8 to 10 years. What about you, Hemant?
So, yeah, of course, e-scooter is going to be there and we will be one of the largest. The user behavior of using a two-wheeler is not going to change. Fuel, if you see IC engine, R&D has stopped, only focusing on EV. If it just merge these two things, I think there's no doubt that it's going to be there. I think by 2030, we should be more or less be number one or player in the EV as well. What about you? I believe the same, as we have like huge economy here in India. I think like it will be done by 2030, and that's it. Yeah. I just got to know from my team that we still have some time, so I'm going to ask you a couple of more questions, if you don't mind. Suhas, if you have to educate people who still believe that ICE engines are way better than EV, what message would that be? And what are the points that you would say that, you know, these are the merits for which you should invest in an EV? So, if you're looking at an economical perspective, of course, EVs will win over ICs in long term. If you look at the technology perspective, I think you have more fun on EVs than ICs. ICs do 0 to 40 in what, 6-7 seconds? Try on simple one, you will do it on the fastest way. Or any other scooter out there, right? Third thing is they're much more safer compared to ICs also. If you look at current thermal management or current certifications on the battery packs that have come in, they're much, much safer than our petrol scooter also. On a day, I think if you put 100 EVs and 100 ICs vehicles, I think 2 or 3 IC vehicles will catch fire and not a EV for sure. I think one. That's a case on that front. And in terms of technology orientation, today you have cloud connectivity. You can give live data on your app. You can unlock your scooter on app. You have call, music, etc. on that, and you have touchscreen on it. You're carrying a smart phone on your scooter for all your daily needs. I don't think EVs fall any short of. There's no comparison on ICs today. I think everyone should just stop buying IC from tomorrow. In fact, today, I think you just go out there. There are a lot of brands. Mr. Hemant Kabra is sitting next to me. We have had a long chat in the past about EVs and other things. I think go out there, just try any other scooter out there which is on the top 3 or top 5, right? You will know yourself that there's no point buying an IC anymore. Rather, you'll be considered to be a Stone Age person rather than someone who is modernized in terms of how the automobiles are working today. Go try an EV. I think you'll find more answers to that. Mr. Hemant, until now we have seen that the use of e-scooters or e-bikes is predominantly into metropolitan cities. But if we have to widespread the use of e-scooters and e-bikes, what are the infrastructure requirements that would be needed to actually spread this adoption of e-scooters in our country? So, according to me, for e-scooters and e-bike, as Suhas said before, see, you can take out this battery and charge at any 5 amp socket. Okay, and if you want to do a little faster, you can charge any 16 amp socket. Okay, so it's pretty easy to do that. I think it is just about early adopters. I think metropolitans have been a little more early adopters in this at this point of time. But I am seeing in last 3-4 months, we got sales and things around it. I think the tier 2, tier 3 cities are also picking up very fast now. Okay. Like I said, how do you see the future of EV industry in India? In just one line, if you have to mention before we wind up. Exciting. Oh, that's a one word, not a sentence. Exciting, futuristic, leading the technology, and we'll be the exporters, not importers. Okay, what about you, Hemant? It's a next gen phase. I think you will feel proud when you ride it. It's going to the moon as we have did already. I'll give you a very interesting stat. Tier 2 or tier 2 as we say it, and tier 3 are the fastest adopters of EVs in last 1.5 years. They have been crazy about it, more than the metro cities. I think these are the cities that are moving forward, which is very surprising for even us, because we designed scooters according to metro cities, saying that अच्छा यार यहाँ पे trend चल रहा है, यहाँ पे सब अच्छी चीजें लेना चाहते हैं. ऐसे iPhone आ गया तो लग गई तार. So I think that has changed. Today, mobile phones and social media has enabled everyone to become part of it. I don't think there's anything metro today. Everyone is the same.
I think even a city with a population of a lakh or a city with a population of 1 crore is the same for us, because everyone is smart, everyone is connected, and everyone knows technology today. Well, on that note, thank you very much indeed for joining us today. Thank you. Thank you. Thank you so much. I'll request our speakers and panelists to please stay on the stage. And I would request Mona Jain, Chief Revenue Officer, Zee Media Corporation Limited, to please come up on the stage and present mementos to our speakers. Can we have a round of applause for our speakers, ladies and gentlemen? That was quite an in-depth and analysis of the session that we just had right now. A round of applause for our first set of panelists. They held an in-depth session on the rise of e-scooters and e-bikes and transforming urban mobility in India. Can we have a round of applause for our first set of panelists, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen, India today stands at the cusp of a groundbreaking revolution in electric mobility. And the next panel discussion will gauge the road ahead for electric vehicles in India and will assess the potential of India in becoming a global hub for EV production. And to discuss this, I would like to call our esteemed set of panelists on the stage. Ladies and gentlemen, please welcome Jyoti Malhotra, MD Volvo Cars India. Ms. Malhotra is the first Indian to head the Swedish company Volvo in India and has over 2 decades of automotive experience in the sales and marketing domain. Can we have a round of applause for Mr. Jyoti Malhotra? We also have with us Madhumita Agarwal, co-founder and CEO, Obein Electric, a Bengaluru-based growth startup specializing in the design manufacturing of performance electric motorcycles with a vision, design in India for the world. A round of applause, ladies and gentlemen. Let's also welcome our last panelist of the session, Mr. Arun Malhotra. Mr. Malhotra is an auto industry expert and an IIM Calcutta alumni. He joined the industry at a nascent stage and has been a part of the Indian auto industry for 3 decades now. And the session will be moderated by Dinesh Sharma, technology editor, Zee Media. A round of applause for our next session of panelists, ladies and gentlemen. What an amazing lineup of guests we have. I'm super excited. Let me start with Mr. Jyoti. So you already have XC40 Recharge in your kitty. First of all, tell me, how exciting is EV space, being the legacy brand which has been known to create amazing ICE engine cars and now also starting, electric vehicle cars. How has been the journey and what are the consumer trends? So first of all, I think I'm sure many of you would know, globally Volvo announced a few years back that we are completely going to shift from IC engines to electric vehicles. And by 2030, we want to become a full electric car company. That was the start. I think this was announced like way back in 2017. I think we were the first global manufacturer to announce that. And we have lived up to that. And there is a whole lineup coming up. And in India, as you said, we already launched XC40 Recharge. And we have got, I would say, amazing response. In the sense, if you see within our own portfolio, we are selling close to 27% of our total portfolio of sales is now coming from BEV, which is only with one car line. And if you look at our own share, within the luxury EV segment, we are, I think, close to 25% again with one car line. So I think it is very, very encouraging. And we have a big lineup coming very soon. On 4th September, we are launching the next electric car, which is a C40 Recharge, which is coming. So I think my belief is that at least in this segment, I think customers are ready. They are wanting better technology, better mileage,
and cars with as much smartification as they call. And I think we are here to sort of serve them and ensure that we are able to serve them the best possible products. Madhumita, you are the founder and CEO of Oben Electrics. You are into e-bikes. You might be wondering that why am I not in the other session where we were talking about the e-scooters and e-bikes. But I want to understand the women perspective in the EV space. First of all, what was the reason that convinced you, okay, I want to start an EV company, and also I want to get into e-bikes, not in any other space? And as a women entrepreneur, how easy or how difficult that was? Thank you. First of all, thank you for having me here and my esteemed panelists. And it's a pleasure to share stage with such, eminent speakers. So first of all, first I want to address, the women part, right? Any field you are there. As a women entrepreneur, as a women, leader, I feel as a professional, if you are performing, you are up to the, level, then that suffices everything. So there is no difference as a woman. Yes, as a woman, you have different responsibility at home plus office. That's only additional. Otherwise, professionally, you have to be equally equipped, equally professional, equally, skilled to be on the table. So I would say difficulty, yes, in the manufacturing sector, being a woman, it's a different sector where mostly you don't see women, right? Now, coming from a background, I come from R&D background. So prior to this, how I got introduced to EV, it was not just a dream or something. Previous to this, the R&D company, which I'm also a founder of that company, where for 6 years I was doing R&D in that space, working for different other companies. And that is where I got introduced to EV and the entire EV landscape. Looking at the future, what it brings, and that's the next, right? EV is real. So having said that, when I was working during that tenure, I could see that there is a lot of scope of kind of work, gaps, problems, right? Problems means opportunities. So that's how kind of that pulled me that, yes, this is a space I want to, and I want to build a product of my own. Now coming to why didn't I choose bike, right? The whole world was moving to a scooter. But if you look at India, India is the world's largest motorcycle market. But motorcycles are very, very complex to build. You know, how in India EV picked up? It picked up from the B2B segment, which is like scooters, more, easily available, or, we have access to it. But to build a motorcycle, there is a lot of R&D needed. I don't say that scooter doesn't need, but it takes time to adopt. And there is a kind of in the consumer's mind that will it be a ICE comparable motorcycle? That's the first question to be answered. And as an OEM, that's the even a great responsibility we have, that can we make a ICE comparable product? So I think that's my journey, how it started into the EV and why I decided that I should get into motorcycle, because that's the space, India is still has to grow. Mr. Arun Malhotra, you are an automobile industry expert. You know this industry. You are the best person to talk about it. I want to understand from you, because you have seen everything. What, according to you, do you really think that EV industry is as exciting as ICE, or maybe better? And what are the factors that are actually pushing and making the customer also excited about this particular space? So thanks, Z, for giving me the opportunity to be here. So the question is that what is exciting enough that people should shift from ICE engines to EV? Well, I think that the previous panel was mentioned in terms of emissions, in terms of technology, in terms of ease of driving, in terms of future technologies being incorporated. So that's pushing clearly in this area. But I think one of the challenges in EV is, every segment of EV has its own dynamics. A two-wheeler EV has a different dynamics. A three-wheeler has a different dynamics. A passenger vehicle has different dynamics. Heavy commercial vehicle has different. And within two-wheelers, as I mentioned, even the scooters and motorcycles have different dynamics. So I think that
a better understanding of the dynamics is important. But I think I would like to play the devil's advocate. And it's an exciting journey. It started. I've been part of the two-wheeler industry for first 15 years of my career, so I can see clearly the veins of change are coming. But then the question is it being accelerated at pace? Some of them are finding the last 6 months, and somewhat it's becoming more constant. It needs to leapfrog. And I believe there are 5 R's which we need to answer very strongly and clearly, over and above everything. And I think there's progress on these R's. Right price. When I say right price, it also means the price of financing, because financing is not all that easily available, whether in terms of its down payment or whether it's, so that is the right price. Then is range mentioned. Range in terms of how much it can drive. Then reach in terms of network for EV charging. Then reliability. Reliability is something which has to be ingrained that it is more reliable. And then is the peace of mind or reassurance which comes from resale value. So each of these R's has to be focused on, over and above the technology. See, we are still at a very inflection point. I mean, two-wheelers, we're hardly about 7%, cars, we're 2%. It's early days. But I believe the moment you cross a double digit, it makes a difference. I think one thing clearly mentioned, I mentioned, is about motorcycles contributing 2/3 of the two-wheeler market. But if you look at the two-wheeler sales, EV sales, hardly it contributes very, very small volumes. Somehow the government policy also, the FAME benefit doesn't favor, because you that 1.5 lakh limit puts a limit to the motorcycle because it's a more expensive technology. So we got to get a ground level. And once the motorcycle revolution starts, because that's 2/3 of the market, and that is where India is the net exporter, I think we become too irreversible. So scooters, motorcycles, both have to go hand in hand. So this I see, it's exciting times. And I think one thing which shows that why the time has arrived is a lot of legacy players, I don't want to take names, but who were existing big IC players have now jumped into the big fray into this, which clearly shows that there is a market, there is a potential. Otherwise, they wouldn't have jumped in. So clearly, good times, exciting times. Mr. Jyoti, you understand consumer trends pretty well. If we go to any OEM's showroom or virtually visit their showroom through website, we do get to see some electric vehicle cars on their website or in their showroom. How soon do you think it'll take, how much do you think it'll take time to actually replace those ICE engine cars with EVs? Or do you think that this will go hand in hand, let's say for about another 5-10 years? See, I think as Mr. Arun Malhotra just said, I think each of the segment will have a different dynamic. And I think the pace of adoption will also be very different in each of the segment. And I think it will also depend upon many other factors which are external. But this is a new technology. It has to lead with, I think, all the 5 R's that Mr. Arun Malhotra say will have a say in every segment in its own pace. My belief is the adoption is going to be faster at the top end and the bottom end of the whole pyramid. And I think two-wheeler probably is just starting up, but I think it will accelerate at a much faster pace as the time goes by. And I think, and same I think for the luxury EV segment. Within the passenger vehicles, I think the adoption will happen in the top end, which is the luxury segment. And there are reasons for both. And I can talk more about from a luxury PV perspective. What I see when it comes to range, if we are able to offer a range which is, let's say, more than or around 500 kilometers, customers are ready to take it, because 500 kilometers in a city like Delhi, if you are clearly moving from point A to point B and you do even, let's say, 50 kilometers a day or more, you are sorted for a week. So you need to charge once in a week over a weekend, and I think that takes care of a lot of the anxiety when it comes to range. And in this segment, typically our customers have multiple cars. So if they really have to go real long distance, I think even that is taken care of. But I have seen one interesting, with early sort of adoption of XC40, what we have sold, we have seen one interesting sort of phenomena or insight. Initially, customers are a little awry that, okay, I have to, they first try, let's say first 1 or 2 months, they will try moving the car within the city. They want to be really assured that if manufacturer is saying 400 kilometers, it really gives that much. So that's once one has that reassurance. I think one of the R's which Malhotra sir talk about is, once you have that reassurance, now you say, okay, let me now go on a longer ride. I'm ready to go from, let's say, Delhi to Chandigarh or Delhi to Lucknow, and on app find a
a charging point, and I think just go along with that. People do that. And these people are going to become the ambassadors. And I think this clan is going to multiply very fast. So I think, and what we are seeing, another very interesting insight is the average age of the buyer is coming down. So when I compare XC40, which is available both in ICE and BEV, the younger lot is the one who are buying BEVs, and it is more females as a diversity who are buying BEVs, which is a very strong indication that society in general is now ready to accept BEV as a technology, and I think it is going to move on. But I think will ICE completely go away? I don't think it's going to happen overnight. But in the end, each organization, each company will have to decide their pace. I think it is not going to be driven by market, it is more driven. So if you are entering only electric, you're going to be an all-electric car company. We are going with an intent that we want to become an all-electric car company because we believe market is going to shift. And I think globally it is being said that 25, 26 is going to the inflection point when this technology from all various 5 Rs or whatever you talk about will come to a point where it will take off. The question is, as each company, are we ready to be ready for that inflection point, or are we going to miss the bus? And I think that is, again, I would say one of the reasons that legacy players are also coming forward, because everybody wants to be ready when the right time comes. So if you're going to wait and inflection point to come and then start, probably you may end up losing. We have a very strong belief within our Volvo that I think this is the opportunity, and we need to be clear and, as they say, ride this one horse race. And our horse we have chosen is EV, and that's what we are going ahead with. Madhumita, bikes definitely give you thrill, but how can you make it from a safety point of view, how can you improve it, and how can you build that confidence in the consumers that if you're riding an e-bike, it is safe to ride? So what are your plans, and how will you address this challenge? Yeah. So first of all, we need to understand why bikes are, more bought in India, First of all, as I think everyone has talked about infrastructure, the way we have roads and all. And in this forum, if I say roads are not that great, not the right thing, but yes, the way we drive, the consumer, how they kind of use it. So bikes are more from the reliability and more from a kind of a strength while, the entire family is riding on it. When you come to EVs, first of all, we have to understand what has changed in EV. The consumer is used to driving ICE vehicles. They are not new. We are not introducing anything. So first is we have to make a bike first. Bike, when we say it's the mechanical part, the reliability part, the R, which, sir was mentioning, right? That's the first thing to be cracked. That has to be first brought in. In EV, the other thing comes in is the refueling experience, the battery, kind of how do I charge, what is the range. So in that, definitely in Oben, what we have actually done is when the world was again going towards NMC, we picked the LFP batteries, which are more, kind of robust, more reliable, safer, the higher heat resistance. So that is on a safety aspect, which also has more cycles. Now coming to consumers' mindset, these are all technical jargons, right, which consumer may not understand. They are looking at, still the consumer says, kitna deti hai gaadi, right? Still they come, in the EV question. Also. Yeah. That's the question they have. So now from the consumer point of view, what has changed is the behavior, consumer behavior, that yes, it should first of all run like a motorcycle. So 0 to 43 seconds, that's what Open Road talks about, and that's what we deliver. That's what even the consumer is looking at. That's first thing. Second, kitna deti hai range. On an average, a daily commuter in India rides 30 to 35 kilometers. We are not talking about, we are not even targeting the leisurely, people, those who go on long rides. Maybe, take any brand in the 150cc segment or the 100 to 150cc segment, right? That's the dominant market in India. On an average, they drive that much. So they're looking at a, range of how much? 100 plus, right? So that's where OEM should focus.
on getting that kind of a range. So that takes care of whether I can use it daily and come back home and charge. Next, what they're looking at is, can I charge it at ease, right? Because that's sometimes, it is a transition. In mobiles also right now, if you see, we have come from, slow charging to fast charging. So that's something, again, an area of, R&D and innovation, where we have also introduced home fast charging. So that's, again, a very big concern for the consumer, from reliability to how do I charge, how easily I transition. So that all comes with a cost parity now. It's not just ends at the normal consumer, not looking at just these, reliability, ease of charging, range. It's also looking at cost parity. Is it very expensive compared to ICE? Because ICE option is already there. As a common man, I think he's least concerned about, climate, but more about, will he be able to, write a check to buy that, because it's a very important commodity in his life. So again, bringing that price parity. So I would say there are three triangles to it that get a right product. When I say right product, reliable product, like compared to ICE. Yeah. And then there is a charging solution, making it very easy for the transition. Third is everything put together at the right price. So I think that is what will bring the shift. Sure. Yeah. Mr. Arun, I want to understand, since you know this industry so well, how do government policies and schemes are impacting the adoption of electric vehicles? And is there any room for improvement where this whole process can be expedited? So I think government has been very, very proactive and positive on this segment. If you look at it, if you talk about level playing field, today we have 5% GST on two-wheelers, on EVs, on IC engines 28%. You have a FAME policy benefit, which is substantial. Now it's been reduced, but still it is there. Then you have a state government incentive, some states give. And then there's the benefit of a registration road tax, which some people waive off. So effectively, even today, the IC engines, or I would say the EVs, have a 40,000 rupee additional kitty built into it. Now, how long that will remain, I don't know. But government has been very positive on this entire thing. The second thing, I think in passenger vehicles, somehow the entire FAME policy is focused only towards commercial application. So probably to give a kickstart to it, even for personal application, it's to be done. But I think the bigger challenge today, if you ask me, in each and every segment, we have a component missing out. Like Nitin mentioned, motorcycles have to take a big slot. Otherwise, you can't go above the 10-15% penetration. That 10 to 40% penetration only comes when motorcycles comes in a big way. We are talking heavy commercial vehicles. There's so much focus on buses, 10,000. But buses are only 10% of the heavy commercial vehicle. 90% are trucks. That is totally excluded. So that's the segment which you need to focus on. Coming to three-wheelers, very good growth. But the whole growth is on lead acid. On the lithium ion, which is a better technology, it hardly contributes 20%. So there are pockets in every segment which are there. Somehow we need to focus on those segments, because it's like saying that you depend on only two batsmen to score all the runs. And if unfortunately they get out, which Indian batsmen are getting out these days, then you are in a very, very weak wicket. So you need to more broad base the EV story in each of the segments in a broader way. So as I said, three-wheeler, somehow to look how to lithium ion. And fourth, in two-wheelers, we had this commercial application of two-wheelers, which has, somehow there's been a lot of confusion on that policy, whether they're allowed, they're safe or not. But the point is there's no national policy. Every state is deciding on its own. So certain things on EV, as a policy level, I think we need to be national in approach. So once we get that, then we get that momentum. Otherwise, what will happen, we'll gain from 1 to 5 to 10, 15, and then we'll get stuck there. If you want 2030, the dream is, once the momentum builds off like a nuclear reaction, which we say, which is that if it gets into momentum of a virtuous cycle, then it shoots up. But I think these bottlenecks need to be addressed. Mr. Jyoti, if we compare the total cost of ownership of an electric vehicle as compared to traditional ICE vehicles, do you think it makes sense, and is it a wise decision to invest in an EV in today's world? And if I can add another question, I don't intend to be a crybaby here, but a lot of people who have invested in EV, they have complaints about range anxiety and charging infrastructure. So if you can, answer these questions, that'll be great.
See, I think there is a raging debate on IC engines versus EV, and one thing I can tell you: ultimately, the better technology will win, and EV is for sure a better technology, no doubt about it. Because if you look at the efficiency in whichever parameter you measure, EVs are more efficient than IC engine any given day. So, from an overall resource perspective, they are more friendly for environment. We may say that, okay, the power which is coming is not coming from the right sources, but it's a matter of time that will also happen. It is very silent. It is, I think, very soothing to drive. It gives a better performance. We are talking about, I think, XC40, for example, can go from 0 to 100 in 4.7 seconds, which is as good as some supercars. So EVs can do that. And it is just the start. See, IC engines have developed and they've come to, I think, a peak in terms of, I think, what they could do. EVs have just made a start. There is so much possibility. As we see, I think, between our XC40 Recharge and C40, within a span of 1.5 years, the range has gone up by 100 kilometers using the same 78 kilowatt hour battery with improved chemistry and few other changes that were made. So my view is that EV is going to win in medium term, long term, and this shift is visible all across. That is the reason we are having this conclave, because I think, as in general, I think there is a belief. Now, in terms of range anxiety, in terms of other, I think, questions which people have, I think only time will tell. When I say time will tell, what I mean is that there are early adopters who are coming forward and adopting this, because we are used to use our vehicles, whether it's a two-wheeler, four-wheeler, motorcycles, whatever, in a certain way. And this habit has been there from the very beginning. And what we are talking is the change of habit, right? And any change is always initially appears to be painful, right? So if you are used to filling a fuel on the way to office, or you fill it every third day, you have a routine to follow. In this case, when people first start, they initially are not sure, right? They don't know what, as I was saying earlier. But what I've seen, very interesting phenomenon I can tell you, and I think this urge to buy EVs are coming, I've seen in both segments. There are many families where a youngster has bought a two-wheeler with a very small range, 80, 100, 150, and somehow able to manage the range. And the family that gets really encouraged, oh, if this boy or this girl can actually manage with a 80, 100 kilometer range and to sort of really commute, because this person, a youngster, is buying purely for economic reasons, no other reason. Because the father or somebody has bought him this, and now his monthly expenses are gone, effectively gone, because somebody's the cost is very low. And then the family gets encouraged that if with 80, 100 kilometers he is able to manage, or she is able to manage, with a 300, 400, 500 kilometer range, I think it's worthwhile to go for EVs. And with all the benefits which are available, I think it makes all the more sense. So my view is, from a larger perspective, those who believe that this change will, or IC engine will last very long, and I think we will make the changes, my best wishes for them. But I think it's going to move to EVs very, very fast, faster than we ever thought. And when it comes to range, I think one thing which I always keep talking about is, see, when mobiles came to India in the very beginning, everybody said it's such a big country, how will the network of those towers and all will come? See, India is a country of million problems and million solutions, right? Our population, our young population is our, as we discussed, demographic dividend, that's big advantage. And you will see, I think, as we blink our eye, this charging infrastructure will change. It's going to happen. You can see every month, if somebody was to track, and unfortunately we don't get that sort of a report, if you track number of chargers which were there 6 months back versus today, that growth is exponential. Wherever I go, people talk about, I think, okay, where is the opportunity to join this EV bandwagon? And people are ready to, I think one of the easy people think is to become a charging point operator. Let me invest in charging point, and that's a big business which is going to boom like anything. So I think it's just a question of belief, and that belief has to come from within.
And in the end, I think it is good for the environment. We are talking about climate change that is happening. We see what is happening around us. And I think EVs can make a big difference. That is the reason youngsters are buying, because they are much better wired when it comes to being environment conscious than elder generation. Sure. And that's why they are the ones who are our biggest promoters. And I think I'm sure this change will accelerate at a pace which we can't even think right now. Okay, we are running out of time, but I want to ask a last question, and I want each one of you to answer it in just one line. 2030 is what everybody is keeping an eye at. The government has said that, 2030 is the target that everybody is focusing on. Madhumita, starting from you, do you think that by that time we can become, if not the best, but one of the biggest EV manufacturing hub or EV market, the matured EV market by 2030? Yeah, I think the daily commuter segment, I'll just speak about the two-wheeler segment. The daily commuter segment, I see there would be a kind of 100% conversion. And that's something is the segment which will pick up fast compared to any other segment, yes. Thank you. Mr. Jyoti? I can tell about us. We are going to be a 60% volume by 26 and 100% electric car company by 2030 in India. And Wow. I think it may happen even faster than that. Wow, that's impressive. What about you, Mr. Arun? So I think this range and reach anxiety being covered in the last 1 year, as Jyoti mentioned, phenomenal development. Also work on alternative technologies through the ITs and other areas which is happening. I think if they start doing, and you need a Zubeen Mehta for an orchestra to put it and like make it a symphony. Somewhat it's slum cacophony, but I think the symphony will come shorter in a short time, and then it'll just zoom ahead. Well, on that note, thank you very much indeed for joining us here. It's been a pleasure having you all. Thank you. I would request our panelists to please stay on the stage. Can we have a round of applause for our panelists who delved upon the electrifying horizons and held an in-depth discussion on the very same. I would now request Mr. Madhusuban, Chief Business Officer, WION and Z Business, to please come up on the stage and present a small token of appreciation to our speakers. Ladies and gentlemen, a round of applause for our panelists who held an in-depth session on electrifying horizons and the future of EVs in India. A round of applause, ladies and gentlemen. For the discussion, gauge the road ahead for electric vehicles in India. And that is Ms. Madhumita Agarwal, co-founder and CEO, Oben Electric. A round of applause. We also had with us Mr. Arun Malhotra, who's an auto industry expert, and also Mr. Jyoti Malhotra, MD, Volvo Cars. A round of applause for our set of panelists, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you for being with us today. Ladies and gentlemen, it gives me immense happiness and privilege to welcome our guest of honor for today's conclave, Shri Kailash Gehlot, Minister of Transport in New Delhi. Shri Gehlot is the man behind key transport schemes in the Indian national capital. To name some, the Pink Pass scheme on the buses in New Delhi, the electric vehicle policy, and also the high-tech security system in buses for women's safety. A round of applause for Shri Gehlot, ladies and gentlemen. And these projects have all been rolled out under Shri Kailash Gehlot's supervision. Delhi's EV policy has been called the most progressive EV policy in India and among the best globally as well. And no point for guessing, New Delhi has become India's electric vehicle capital. On that note, I would request our guest of honor, Shri Gehlot, to please come up on the stage. Can we have a round of applause for Shri Kailash Gehlot, ladies and gentlemen? I would also request Mr. Pranay Upadhyay, anchor Zeenews, to come up on the stage and hold a brief discussion with our guest of honor on Delhi's tryst with EV adoption. Stage is all yours, Pranay. Thank you, Reza. Thank you very much. कैलाश जी, आपका बहुत स्वागत है इस खास कॉन्क्लेव में जिस पर हम ईवी की बात कर रहे हैं। और दिल्ली का रिकॉर्ड देखा जाए तो आपको जो है वो ईवी मिनिस्टर कहा जा सकता है। आपने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रखा है। लेकिन 3 साल हो रहे हैं आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी थी, अभी तक के सफ़र को अगर आप देखें, दिल्ली का इम्प्रेसिव बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एडॉप्शन के हिसाब से भी और बैरियर्स के हिसाब से भी? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे
यहाँ आने का मौका मिला और अपने विचार रखने का मौका मिला। आई थिंक एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर द जर्नी हैज़ बीन वेरी एक्साइटिंग एंड इन फैक्ट जब मुझे आज भी दिन याद है जब 2020 में हम जब ये ईवी पॉलिसी फ्रेम कर रहे थे तो वी हैड नथिंग टू फॉल बैक ऑन, क्योंकि इस तरह की कोई पॉलिसी पहले थी नहीं। और वो दिन से लेके आज तक आई थिंक डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस आई थिंक वी हैव कम अप विद वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक ईवी पॉलिसी। मेरे ख्याल से हर एक क्वार्टर से उसको अप्रिशिएट किया गया है और उसको बढ़िया तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है एंड उसका नतीजा ये है कि 2020 में हम कहते थे कि दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाना है। आज मेरे ख्याल से हम पूरे विद फुल कॉन्फिडेंस और गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज दिल्ली जो है वो ईवी कैपिटल पूरे देश का है। लेकिन सर जहाँ से आपने शुरू किया था वो तो ज़ीरो था, तो 0 to 60 के बाद में 60 to 80 जो होता है वो फ्यूल ज़्यादा लेता है। तो अगर उसके लिहाज से बात किया जाए तो अभी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपसे पहले नितिन गडकरी जी भी यहाँ थे, वो भी इन्हीं चीज़ों पे बात कर रहे थे कि कैसे इसको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन दाम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम स्टार्ट की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, 5% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी आप दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ और थोड़ी सी रियायत मिल जाए? देखिए मेरा मानना है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से ईवी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जो प्रमोट किया है, मेरे ख्याल से पूरे देश में उस प्रकार से आई थिंक दिल्ली की अगर बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से उसको प्रमोट किया। सब्सिडी और इंसेंटिव्स जो दिए वो बहुत अच्छे तरीके से दिए, चाहे वो कैश इंसेंटिव है, चाहे रजिस्ट्रेशन, जैसे आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो माफ़ है, पार्किंग चार्जेस माफ़ हैं। बट इन द लॉन्ग रन अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अगर उसको परमानेंट करना है और उसको हमारे अपने जो वे ऑफ लाइफ है उसका अगर पार्ट बनाना है तो आई थिंक आज के दिन जो कॉस्ट है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की उसको और नीचे आना पड़ेगा। सबवेंशन स्कीम जो है दैट वाज वन ऑफ द थॉट की अगर सपोज किसी को लोन लेने में दिक्कत है या उसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक नॉट मेनी पीपल हैव कम फॉरवर्ड फॉर दैट सबवेंशन स्कीम। उसको हम दोबारा रिविजिट कर रहे हैं। बट इन द लॉन्ग रन जब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक आम आदमी, एक कॉमन मैन की रीच में नहीं होगा तब तक ये चीज़ें मेरे ख्याल से मुश्किलों का सामना थोड़ा हमें करना पड़ेगा। लेकिन सर दिल्ली की अगर बात की जाए, क्योंकि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, दिल्ली में यातायात एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके की वाहनों की भीड़ दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही है और मैं आई एम श्योर कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह महसूस करते होंगे कि ख़ास तौर पर ई रिक्शाज या जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं वो भी बढ़े हैं, जो कन्वेंशनल वाहन हैं वो भी बढ़े हैं और दिल्ली कंजेस्ट होती चली जा रही है। ख़ास तौर पर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे हैं उसके कारण मेट्रो स्टेशंस और उसके आसपास का इलाका बिल्कुल चोक पॉइंट बनता चला जा रहा है। तो क्या वाहनों के रेगुलेशन पर दिल्ली का यातायात मिनिस्टर कुछ सोच रहा है? देखिए फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सब दिल्लीइट्स के लिए रहा है। और आई थिंक जिस प्रकार से ई रिक्शाज ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को दूर किया है, आई थिंक हमने पीछे इलेक्ट्रिक ऑटोज़ भी इंट्रोड्यूस किए और अभी पहली बार दिल्ली में हम 9 मीटर की जो छोटी बसें हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड बसेज हैं वो 12 मीटर की हैं। बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द 9 मीटर स्मॉलर बसेज विच will cater to only the in the community area only and अगर हम उसको कहना चाहें तो उसको हम मोहल्ला बस एक नाम से कह सकते हैं। और जहाँ तक आप कंजेशन की बात कर रहे हैं तो आई थिंक दिल्ली की जो सड़कें हैं और अगर आप लंदन की सड़कें देखें तो मैं तो काफ़ी बार गया हूँ लंदन, इफ़ यू सी अगर वहाँ की रोड्स देखें तो हमारी दिल्ली की सड़कें वहाँ से बहुत चौड़ी हैं। बिल्कुल वेरी दिल्ली हैज़ क्वाइट वाइड रोड्स। आई थिंक कहीं ना कहीं
उसको मैनेज करने की और रेगुलेशन की बात है। जो पूरा ट्रैफिक है हमारा, उसको अगर उसको हम बढ़िया तरीके से मैनेज करें और रेगुलेट करें तो आई थिंक कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। इसीलिए तो मैं इसीलिए सवाल इससे पूछ रहा हूँ कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को यदि सड़क पर उतरकर बसों को लेन के में लाना पड़े तो ये अपने आप में एक बड़ा दिल्ली वालों के लिए भी मैसेज है। यू आस्किंग अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज जिस प्रकार से दिल्ली का जो पूरा गवर्नेंस का जो सेटअप है, पुलिस रिपोर्ट्स टू समबडी एल्स, आई एम द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, पुलिस डज नॉट रिपोर्ट टू दिल्ली गवर्नमेंट। जहाँ तक बस लेन की बात है, आई थिंक इनफैक्ट अगर गडकरी साहब होते तो मैं उनको धन्यवाद बोलता। इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस जहाँ पूरे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स थे और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज थे, एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो कुछ बोलने जा रहा था मैं, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया। तो आई थॉट कि पता नहीं कौन सा काम किया है और क्या कहने वाले हैं, लेकिन आई थिंक आई मस्ट थैंक हिम कि जो उन्होंने कहा और जो एनकरेजिंग वर्ड्स थे कि पहली बार शायद पूरे देश में किसी शहर में बसेज जो हैं वो बस लेन को फॉलो करें, उसको सेंसिटाइज करें। और सबसे बड़ा मेरे ख्याल से पूरे अगर आप देश में देखें तो सबसे बड़ा एक लेन इन्फोर्समेंट प्रोग्राम आप मेरे ख्याल से इट्स बीन मोर देन अ ईयर नाउ, एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू टेल द ड्राइवर्स कि भाई आपकी जो लेन है वो लेफ्ट में है, एंड एट द सेम टाइम वी हैव बीन ट्राइंग टू टेल ऑल व्हीकल ओनर्स कि आप बस जो लेन है उसको फ्री रखें ताकि बसें जो हैं वो लेफ्ट में चल सके, ताकि सो दैट क्योंकि रोड सेफ्टी से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है और पैसेंजर्स को दिक्कत ना आए। और अगर आप बसें जो हमारी अगर लेफ्ट लेन में चलेंगी तो जो राइट वाला जो लेन्स हैं वो पूरी खाली हैं। और चलिए कैलाश जी, आपके बारे में और आपकी सरकार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि केंद्र सरकार के साथ आपका कन्फ्रंटेशन रहता है, तो कम से कम एक मुद्दा तो ऐसा है जिस पे आप और वो एक पेज पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी स्टेट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग का जिक्र किया था। जी नहीं लेकिन एक सवाल इस चीज़ को लेकर भी आ रहा है कि दिल्ली के अंदर अभी भी चार्जिंग पॉइंट्स देश में सबसे ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सारी कैपेसिटी की ज़रूरत है चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, ताकि ईवी का अडॉप्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। इसके लिए क्या कोई नई स्कीम आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कोई नया इंटरवेंशन आप सोच रहे हैं? देखिए, जब भी पहली बार कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स आज के दिन दिल्ली में हैं। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रफली 4,500 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स आज हैं दिल्ली में जो फंक्शनल हैं, और हमारा जो टारगेट है वो लगभग 25,000 के आसपास है कि 25,000 चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो पूरी दिल्ली में हों। एंड 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर का अगर आप ग्रिड पकड़ें, सो दैट इज़ आवर टारगेट। चार्जिंग पॉइंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। आपको याद हो जब CNG इंट्रोड्यूस हुआ था जी, तो सबके मन में एक ही सवाल हुआ करता था कि यार नेक्स्ट जो है वो CNG पंप कहाँ मिलेगा, ख़त्म हो गए तो क्या करेंगे। उस चार्जिंग एंग्जाइटी को दूर करने के लिए वही हमारा टारगेट है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर है तो उसको नियरेस्ट जो है चार्जिंग पॉइंट मिल जाए। एंड हमने जितने भी चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो सारे हमने इंटीग्रेट किए हुए हैं। जो हमारा वन डेली ऐप है उस पर आप नियरेस्ट आपका जो चार्जिंग पॉइंट है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि ये चार्जिंग पॉइंट ऑक्यूपाइड है या नहीं है। और अगर आप चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें तो पूरे देश में सबसे सस्ती चार्जिंग वो दिल्ली में है। 3 रुपीज़ पर यूनिट पे आप स्लो चार्जिंग अपने व्हीकल की कर सकते हैं। तो ये पूरे देश में कहीं नहीं है, बल्कि आई थिंक आई वोंट बी रॉन्ग इफ आई से दैट बढ़ा तो ये और लो हो सकता है जी। नंबर यदि और बढ़ता है चार्जिंग स्टेशन का तो ये नंबर बिल्कुल जी। रादर आई थिंक आई वोंट बी रॉन्ग, ये सबसे सस्ती पूरी दुनिया में होगी।
इससे सस्ती चार्जिंग आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो सी आर होल जितनी फिलॉसफी है आम आदमी पार्टी की एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो ये रहा कि सपोज आपको अपने घर में अगर कोई चार्जिंग पॉइंट लगाना है, और मैं जो भी ऑडियंस है उसको ये भी बताना चाहूँगा, तो पूरे देश में सबसे सिंपल सरल ईजीएस्ट जो है वो दिल्ली में है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल आपका जो भी डिस्कॉम है एरिया का, जो कंपनी बिजली प्रोवाइड कर रही है, आपको सिर्फ उसे कॉल करना है एंड उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि आपको केवल 2,000 रुपये देने हैं। सो मतलब 2,000 रुपये में आप अपने घर पर चार्जिंग पॉइंट लगवा सकते हैं। उसकी पूरी जो कॉस्ट है वो लगभग 8,000 साढ़े 8,000 रुपये आती है। द 6,000 रुपीज़ जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट बेयर करती है। एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एंटायर कंट्री कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे चार्जिंग पॉइंट लगाने में, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने की सुविधा जो है वो केवल दिल्ली में है और कहीं नहीं है। कैलाश जी, दिल्ली में हमेशा से ये एक मुद्दा रहा है कि पर्सनल व्हीकल वर्सेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट में जहाँ तक आपको पता ही है बस थोड़ा सा विवादित मुद्दा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस के फ्लीट को लेकर एक चैलेंज है, अवेलेबिलिटी एक चैलेंज है, जो OEMs हैं उनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक चैलेंज है। आप कई बार इस चीज़ का जिक्र करते रहे हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस का फ्लीट, उसको लेके आपका टारगेट क्या है और उस पर आप कैसे काम कर रहे हैं? आई थिंक एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए, अगर आप मेरे से पूछें, तो दिल्ली में बस लाने का है। उस पर आपका बस नहीं चल रहा? सॉरी, उस पर आपका बस चलता है कि नहीं चलता? नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज इसलिए है कि दे आर लिमिटेड प्लेयर्स, जो अभी तो फिर भी आई थिंक सम न्यू कंपनीज हैव कम अप, लेकिन पूरा जो बस जो मार्केट है, इट इज़ आई थिंक देयर जस्ट 2 to 3 सीरियस प्लेयर्स इन द मार्केट। एंड बट हैविंग सेड दैट, दिल्ली का बहुत एक एग्रेसिव टारगेट हमने सेट किया है, और माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का ये बिल्कुल साफ कहना है और बिल्कुल क्लियर विजन है कि दिल्ली को जितने भी, अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें और जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, उनके मुकाबले में हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके आना है। और उसी चीज़ को, सो वन इज़ दैट। सेकंड, जितने भी हम इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस करेंगे और जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली में इंट्रोड्यूस करेंगे, आई थिंक जो उससे एक बहुत सीरियस जो टॉपिक जुड़ा है वो है पोल्यूशन का। जी, दिल्ली का जो पोल्यूशन है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक बस सड़क पे आएंगे और व्हीकल्स आएंगे, उतना ही हमारा पोल्यूशन जो है वो कम होगा। और उसको माइंड में रखते हुए वी हैव सेट अ वेरी एग्रेसिव टारगेट, रादर वी हैव मेड दिस स्टेटमेंट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दिल्ली में हमारी बाय 2025 we will have around 10,480 buses. So मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज फिलहाल दिल्ली में हमारे लगभग 7,000 के आसपास बसेज हैं, एंड दिस इज द ऑल टाइम हाई। मैं ये भी बात यहाँ आपको ध्यान दिला दूँ कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से पिछले 2015 से लेके अभी तक पिछले लगभग 8 साल में जितना काम दिल्ली सरकार ने ऑनरेबल CM अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस प्रकार से काम, स्पेशली बसेस की अगर हम बात करें तो उस प्रकार से नहीं हुआ। एट द मोमेंट अगर हम 7,400 और 300 की बसेस की बात करें तो दिस इज़ ऑल टाइम हाई। इतनी बसेस जो हैं दिल्ली में आज से पहले कभी नहीं थी। सो 2025 में हमने टारगेट रखा है अपना 10,480 बसेस का। इस 10,480 बसेस में से 80% जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। ओके, तो अगर आप उसको ट्रांसलेट करें तो लगभग 8,000 के आसपास हमारी वो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। और आपको जानकारी खुशी होगी कि उसका पूरा रोड मैप जो है वो हमने तैयार किया हुआ है। 6,000 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस के हमने वर्क ऑर्डर्स ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, जिसकी डिलीवरी ऑलरेडी चालू हो गई है।
मैं आपको कोई मतलब ऑफ द कफ में कोई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, पूरा होमवर्क करके मैं आपको बता रहा हूँ कि 6000 इलेक्ट्रिक बसेस के हम बसों पे आपने कितना शोध किया था वो हमने विधानसभा में देखा था। एक सवाल कैलाश जी इस चीज़ को लेकर भी जुड़ा हुआ है, G20 समिट आ रही है और जिस तरीके का ट्रैफिक प्लान बनाया गया है उसको देख के ऐसा लगता है कि हम मेज़बानी की खुशी में तो हैं लेकिन खौफज़दा भी हैं। सारा ट्रैफिक बिल्कुल बंद रहेगा, लोगों से कहा गया है छुट्टी पे चले जाएं। न्यूयॉर्क के अंदर UNGA होता है, दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, दुनिया के कई पुराने शहर हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे? हमें लोगों को कहना पड़ रहा है कि आप घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए। ये सवाल आप नितिन गडकरी से पूछे नहीं पूछे? नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, ट्रैफिक के लिए तो हमारा साहब का आपसे पड़ता है, लेकिन ट्रैफिक के लिए ये हमेशा की चीज़ है। देखिए तो, G20 हमारे देश में न्यू दिल्ली में हो रहा है। आई थिंक हम सबके लिए गर्व की बात है और इसका पूरा जो प्लान है, स्पेशली जो ट्रैफिक का, सिक्योरिटी का, आई थिंक इट इज़ ड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम दिल्ली जो है पूरी सपोर्ट कर रही है, बिकॉज हमारा शहर है, हमारा घर है और हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको पेश करना है सबके सामने। एक आखिरी सवाल कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर कैलाश गहलोत का जो ड्रीम है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को अगर आपको मौका मिले तो आप कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहेंगे? एक ड्रीम प्रोजेक्ट की अगर मैं पूछूं आपसे तो मेरा अगर आप ड्रीम अगर पूछें एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो मैं बिल्कुल जो देखिए ये कहा गया है कि जो भी डेवलप्ड शहर है और नेशन है, तो अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आई थिंक जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक वेल टू डू पर्सन और एक अमीर आदमी जब तक विथ फुल कन्विक्शन ये नहीं कह सकता कि आई विल टेक अ बस एंड गो वेरेवर ही हैज़ टू गो, आई थिंक दैट इज़ माई ड्रीम कि मैं और आप एक साधारण व्यक्ति की तरह हम ये जिस दिन हम बस लेना चालू कर देंगे और जो अमीर लोग हैं वो बस को यूज़ करने लगेंगे, तो मेरे ख्याल से वो दिन हम कह सकते हैं कि हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल मजबूत है। और एक हमारा जो गोल है, क्योंकि जितने ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज़ करेंगे उतना ही हमारा जो है वो शहर अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। और जो पोल्यूशन है, आपने जो बात की प्राइवेट व्हीकल्स की, आज किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट व्हीकल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि उसको लगता है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके अपने जो डेस्टिनेशन है उसका, चाहे वो अपनी जॉब के लिए है, चाहे वो शॉपिंग के लिए है, या कोई हॉस्पिटल जाना है, कहीं भी जाना है, उसके मन में कहीं ना कहीं आज भी वो एक हेजिटेशन है, एक हिचक है कि यार कि मैं बस लूँगा तो बस समय पे मिलेगी नहीं मिलेगी, बस मिली तो उसमें सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, ऑटो टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा, टैक्सी जो है वो मिलेगी नहीं मिलेगी। आई थिंक ये पूरे व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट इज़ नॉट वन सेगमेंट, इट इज़ द एंटायर लिंकेज फ्रॉम जब आप अपना घर छोड़ते हैं, ऑफिस छोड़ते हैं, और जब तक ऑफिस आप अपने घर में या ऑफिस में नहीं आते हैं। तो मेरा ड्रीम है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा दिल्ली का इतना स्मूथ हो और इतना रिलायबल हो, एफिशिएंट हो और उतना चीप हो कि हर व्यक्ति जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले, ताकि वी कैन सेट एन एग्जाम्पल फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड फॉर द कंट्री ऑल्सो। चलिए, आपके इन्हीं वादों के साथ हम उम्मीद करते हैं और दिल्ली वाला हर व्यक्ति चाहेगा कि आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो, क्योंकि इससे हर आदमी की ज़िंदगी की सहूलियत जो है वो जुड़ी हुई है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मंच पर आने के लिए। Round of applause for Shri Gehlot and Pranay as well. Thank you for being with us, Shri Gehlot. I would request you to please stay on the stage. I would also request Mona Jain, Chief Revenue Officer, Zee Media Corporation Limited, to please come up on the stage and present a small token of appreciation to Shri Gehlot. A round of applause for Shri Gehlot, Minister of Transport, New Delhi, and the man behind transport schemes in the Indian national capital. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause for Shri Kailash Gehlot? A round of applause for Shri Kailash Gehlot, Minister of Transport, New Delhi, and the man behind key transport schemes in the Indian national capital.
Ladies and gentlemen, don't go anywhere. Stay with us till the end of the event. We have something very special for you at the end of the conclave, an entertainment act by Anshu Moore, who has performed at over 700 live shows in India and abroad. But moving on to our next panel discussion, which will now focus on the holistic impact of electric transportation and how the electric vehicle revolution can benefit everyone, exactly from the air you breathe to the money you save. And to discuss all of this, I would like to invite our next set of panelists on the stage. We have with us K. Vijaya Kumar, MD and CEO, SAR Electric Mobility Electrics. Mr. Kumar is a pioneer in the electric mobility industry with over 3 decades of experience leading and transforming organizations in the automotive sector. May I request you, sir, to please join us on the stage. Right, we also have with us, so I would request you to wait for a bit, please. We also have with us Mr. Vijay Kapoor, founder of, and he is also very fondly known as the father of e-rickshaw. He has a legacy of almost 4 decades in creating components for automotive industries in India. And we also have with us Anupam Batra, CEO, Arzu Electricity Vehicle, and is very well known with its brand Arzu in electric vehicle segment. Well, SKS Trading is one of the largest leading e-vehicle manufacturing company in India since 2013. And the session will be moderated by Vivasavan Srivastava, co-founder group We, which is an online new car buying platform. Good evening, everyone. Thank you for joining us for this electrified evening. I would like to start by giving a small tribute to all the esteemed speakers we have on stage with us. क्योंकि हमारी ज़िंदगी में silently, और मैं silently इसलिए बोल रहा हूँ because हम लोग electric vehicles की बात कर रहे हैं, silently काफ़ी बदलाव आ गए हैं इन लोग के efforts की वजह से. सुबह-सुबह when my team takes the metro to office, सबसे पहले वो उतरते हैं, EVs में चढ़ते हैं. ठीक है, मेरे घर पे जितने भी खाना डिलीवर होता है आजकल, they're all coming from battery powered electric two-wheelers now. So slowly but surely everything around us is going electric. But I want to obviously hear a little more about this journey, how we reached here. So Mr. Kapoor, I'll start with you. थोड़ा अपनी journey के बारे में बताइए. How have we reached here in terms of the usage of e-rickshaws? What is the impact it is having on urban life today in cities like Delhi? In fact, it started when I was looking at rickshaw pullers, their hard life, torn clothes, lot of sweating, and in the evening they had to drink to charge them for the next day. So it came into my mind that if we are able, we should do something for that. And slowly, it came into my mind that we should go for electrifying this e-rickshaw. And it took about 2 years to develop the present form of e-rickshaw, which was very nicely accepted by all rickshaw pullers. And this is how we reached our goal. And but later on, Mr. Nitin Gadkari really helped us in getting the legal formalities done so that it could be used on the roads. Otherwise, it was not possible to use them on the roads without the legal formalities are done. अनुपम जी, आपसे अगला सवाल. ई-रिक्शाज एक कल्चरल आइकॉन बन चुका है शहरों में, जैसे मैंने आपको बताया. तो अभी तो ई-रिक्शाज मोस्टली शॉर्ट कम्यूट्स के लिए यूज़ होता है ना? जैसे मैंने बताया, मेट्रो स्टेशन से ऑफिस तक, छोटे डिस्टेंसेस के लिए. थोड़ा फ्यूचर प्लान बताइए कि 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक स्पेस में क्या इनोवेशंस कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सालों में? ई रिक्शा जब हम इंडिया में लेके आए थे, मैं लगभग 10 साल से इस लाइन में हूँ. मिस्टर कपूर फर्स्ट लेके आए, सेकंड हम थे. अर्लियर वी वर इम्पोर्टिंग ओनली. 2013 में हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की. उस टाइम इंडिया में कोई इसका कोई कायदा कानून, कोई इस पर नंबर प्लेट या कोई ऑफिशियल नहीं था. इट वाज टोटली अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट. 2014 में गडकरी साहब ने इसको एक अप्रूवल दी, इसको एक प्रोडक्ट का नाम दिया और एक कैटेगरी में ये रजिस्ट्रेशन में आ गया. और उस टाइम के रिक्शा में और आज के रिक्शा में
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले बहुत सारे चैलेंजेस थे रिक्शा में। इसमें चैलेंज आया बैटरी का, इट वाज माइलेज ओनली 60 किलोमीटर एंड क्योंकि हमारे टेम्परेचर डिफरेंट थे, चाइना का टेम्परेचर अलग थे, बैटरीज कंप्लेंट आती थी, मोटर्स की कंप्लेंट थी, कंट्रोलर्स की कंप्लेंट थी, चेसिस हल्की थी, रोड कंडीशन अलग थी। तो वो सारे चैलेंजेस जो आए थे वो हमने सब टाइम के हिसाब से चेंज किए। तब रिक्शा सिर्फ 60 से 70 किलोमीटर चलता था। आज ई रिक्शा जो है ये लास्ट माइल प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी माइलेज आ गई है 150 किलोमीटर तक की। जैसे जैसे कस्टमर रिक्वायरमेंट थी, पहले ई रिक्शा सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में था, अभी रिक्शा बी और सी क्लास टाउन में पहुंच गया, अभी गांव में जा रहा है एंड इट्स ए बिग इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल सेक्टर का है, एमएसएमई का प्रोडक्ट है। कुछ चैलेंजेस अभी पेंडिंग है इसमें, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। अभी जो चैलेंजेस पेंडिंग है इस इंडस्ट्री में वो हैं कि इसको कोई भी सरकारी बैंक फाइनेंस नहीं करता, प्राइवेट फाइनेंस कंपनी चल रही हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ई रिक्शा इज़ इंक्रीजिंग और जो रिक्शा ऑपरेटर हैं उसको तकलीफ आ रही है। ये अभी चैलेंज है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई हैं, इम्प्रूव हुई हैं, हमने क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करी है, चीज़ों में इम्प्रूव। अब नेक्स्ट मॉडल इज़ 3 व्हीलर, जो अपकमिंग मॉडल आने वाले हैं फ्यूचर में, वो 3 व्हीलर हैं जो हाई स्पीड होंगे। रिक्शा स्पीड इज़ ओनली 25 किलोमीटर एंड जो 3 व्हीलर L5 कैटेगरी जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक में, उसकी स्पीड 50 से 60 किलोमीटर रहेगी। वो भी एक नया रेवोल्यूशन कंट्री में स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी सड़क पे दिखेगा, रोड पे दिखेगा। Mr. Kumar, coming to you now. So, unlike e-rickshaws, the transition to two-wheeler electric bikes has been rather sudden. In fact, वो suddenly market में एक दिन प्रकट हो गए थे and people were confused. Should we adopt or should we just wait and watch? So just talk to us a bit about how the journey has been like for you in the electric two-wheeler space. Well, first of all, very good evening and thank you so much for inviting us. Let me introduce the company so that everybody is aware. So I represent Electrics. So we are the ex-owners of Luminous and we are one of the largest battery manufacturers in the country. हम महीने की 7 लाख बैटरी बनाते हैं, which is predominantly lead and now lithium. और वो जो बैटरी टेक्नोलॉजी को हम आगे BMS, मोटर, कंट्रोलर and we are forward integrating into electric mobility, जिसमें अब हम रिक्शा अंदाज के नाम से बनाते हैं और 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक्स के नाम से बनाते हैं। तो विजय जी और अनुपम जी यहाँ हैं तो मैं रिक्शे की बात कम करूँगा, बट आई वुड से वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ई रिक्शा कंपनी इन द कंट्री। इन लास्ट 24 मंथ्स हम अभी 1500 गाड़ी पर मंथ रिक्शे पे आ गए। रही बात 2 व्हीलर की, 2 व्हीलर वाहन पोर्टल में आपको इलेक्ट्रिक्स के नाम से गाड़ियाँ नहीं दिखती हैं इस वक्त, but we are launched our product last month and we will start selling this month and the visibility will be next month. So that's our introduction. Now coming to your question in terms of electric mobility, see India runs on 2 wheelers. अगर आप देखें इंडिया का जो प्रोग्रेस है, आपकी इंडिया की GDP ग्रोथ देखें आप पिछले 30 साल में और 2 व्हीलर ग्रोथ देखें, it is shoulder to shoulder. When Indian economy grows, the Indian 2 wheeler market grows. And today Indian 2 wheeler market is one of the largest in the country and we are the manufacturers more or less for the world. In electric, there are major benefits. One is from the usage standpoint, whether it is the basic TCO, जो आपको benefit एक customer को मिलता है, whether it is on the technology side, the green revolution side, and the overall cost of ownership when you look at the whole product. So I think, I personally believe जो 2 व्हीलर की स्टोरी है इंडिया की वो स्कूटर से शुरू होगी, जो अभी शुरू हुई है, बट 5% मार्केट शेयर पे है सिर्फ इलेक्ट्रिक, क्योंकि फलक्रम ऑफ द मार्केट वो 1 लाख रुपए पे है। 1,10,000 रुपए में इफ यू कैन मेक ए वेरी गुड क्वालिटी स्कूटर विच कैन लास्ट फॉर 7 to 10 years, सिमिलर टू द पेट्रोल स्कूटर्स हियर, एंड विच एवर कंपनी इज एबल टू प्रोवाइड दैट क्वालिटी, दैट प्राइस बैंड is who's going to win. Beyond that, it's not going to happen or it will take its own time. So India में if you look at बलोत्रा जी यहीं बैठे, हम लोग 2 व्हीलर बेचा करते थे आज से 25 साल पहले, तो वो 2 व्हीलर 60,000 रुपए की बिकती थी, 70,000 रुपए की बिकती थी। सो वहाँ से इफ़ यू सी द जर्नी, टुडे 2.5 लाख रुपए का स्कूटर मोटरसाइकिल बिकता है, विच इज़ 30-40%, बट इट हैज़ टेकन 25 years.
it is the same way it's going to happen. Indian consumer today on scooters is looking at a good quality product at 1 lakh rupees. He has those problems which was mentioned in all the other panels, so I'll not dwell upon it, in terms of range anxiety, in terms of safety and security, in terms of reliability and quality. But I think those are the things which will, people will overcome as they go along. Understood. So, Mr. Kapoor, coming back to you, we've talked a bit about range anxiety, as Mr. Kumar mentioned. So, range anxiety, मुझे लगता है कि इस segment में भी matter करती है. When we talk about e-rickshaws being used for the last mile connectivity, दिल्ली NCR जैसे शहर में शायद इतना apparent ना हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ शहरों की जैसे कि कानपुर हो गया, जयपुर हो गया, जहाँ पे connectivity is still an issue. इन सब जगहों के लिए what can we expect beyond the current e-rickshaw which we have? क्योंकि अभी वाली जो e-rickshaws है उसकी उतनी रेंज नहीं है, शायद आदमी 10-15 मिनट का जर्नी ले सकता है उससे, बट उसके बियॉन्ड जाने के लिए what are the next future products we can expect in this segment? देखिए, ये जो ई-रिक्शा मार्केट है आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख ई-रिक्शा चल रहे हैं, और 20 लाख ई-रिक्शा से अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है. मैं अभी नितिन गडकरी से बात कर रहा था तो कहते नहीं 1 करोड़ नहीं है, इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है. तो ये इससे कितना बड़ा रेवोल्यूशन आया है. फिर आप उनका स्टैंडर्ड देखिए लिविंग. जो पहले रिक्शा पुलर था उसकी क्या शक्ल थी या कैसे नज़र आता था, और ये कितने रिस्पेक्टेबल तरीके से अच्छे कपड़े डाल के चलाता है और शाम को 800-1500 रुपये तक कमाता है. अब उसके फैमिली के लाइफ का स्टैंडर्ड भी चेंज हो गया है. वो बच्चों को बेटर एजुकेशन देता है, तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा वो भी बेटर आएगा. तो इसलिए ई-रिक्शा एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, बड़ी ज़बरदस्त. अब आप कह रहे हैं नेक्स्ट के लिए क्या है कि इसकी किलोमीटर रिक्वायर्ड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और स्पीड भी ज़्यादा मांग रहे हैं लोग. तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं. जहाँ तक स्पीड की बात है वो उसमें L5 आ रहा है जो ज़्यादा स्पीड में चलेगा तो उसको कवर करेगा. जहाँ तक प्रेजेंट जो ई-रिक्शा अब चल रहा है इसमें हमें नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट में जाना है, जो कि ऑलरेडी वर्क हो रहा है. उसमें हम सोलर ई-रिक्शा ला रहे हैं जो कि थ्रू द डे चलेगा. मतलब उसका जो किलोमीटर्स है 30-50% एक्स्ट्रा होगा, मीन नॉन स्टॉप. वो सवेरे अगर निकलता है घर से ई-रिक्शा लेके रात तक, इट डजंट हैव टू गो फॉर रिचार्ज. तो उससे हमारा बहुत से किलोमीटर कवर हो जाएगा, और जो चलाने वाला है उसकी जो अर्निंग है वो भी 20-30% एक्स्ट्रा हो जाएगी. और उसके बाद जो सोलर वाला ई-रिक्शा होगा उसकी बैटरी की लाइफ ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी. तो वो एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन आने वाला है वेरी सून, जिसके ऑलरेडी हमने एक्सपेरिमेंट मतलब यूज़ कर लिया है, प्रैक्टिकली देख लिया है और रोड्स पे भी डाल दिए हैं. तो दोनों काम हो जाएंगे. L5 विल कवर द स्पीड पार्ट and this will cover the other part. तो अनुपम जी, मुझसे कई बार जब मैंने कस्टमर्स से बातचीत करी है जो EVs देख रहे होते हैं, उनका मेजर कंसर्न होता है कि क्या इससे एक्चुअली इन्वायरमेंट को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं. जैसे कि अभी मिस्टर कपूर ने मेंशन किया था इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, बट इन्वायरमेंटल बेनिफिट जो है वो सबसे ओवर आर्चिंग टॉपिक रहती है. आपकी क्या राय है ई-रिक्शाज के अडॉप्शन से और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर से कितना असर पड़ सकता है इन्वायरमेंट पे? इसका बहुत बड़ा रोल है पोल्यूशन के लिए. आपको दिखता है कि ई-रिक्शा सिर्फ ट्रैफिक जाम करता है. आप ये भूल गए हो, ये लोग जो बोलते हैं, मतलब एक बड़ी कॉमन सी बात हो कि ई-रिक्शा से ट्रैफिक जाम होता है. दिल्ली में ई-रिक्शा से सब जगह नुकसान हो रहा है. जितना पोल्यूशन इसकी वजह से घटा है दिल्ली में, अगर आज ये रिक्शा नहीं होता दिल्ली में, आज लगभग 2 लाख से ऊपर रिक्शा होंगे, तो आज हमारी आंखों में पानी आता, हमारा चलना दोबर होता, इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता. जो IC इंजन के 3 व्हीलर्स हैं या IC गाड़ियाँ हैं, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. ये छोटा प्रोडक्ट है, MSME का मैंने पहले बोला है, स्मॉल स्केल का है. और जो कपूर साहब बोला, इसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है. जो लोग रिक्शा खरीद रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है. बनाने में जो रिक्शा बन रही है छोटी इंडस्ट्रीज़ को बना रही है. आज लगभग इंडिया में 500 से ऊपर इंडस्ट्री हैं जो रिक्शा बना रही हैं अलग अलग एरियाज़ में. तो कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ. तो ये आपके सोच में या एक आम आदमी सोच में भी रिक्शा क्या है, रिक्शा एक पुअर कैटेगरी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है. इसका बहुत बड़ा रोल है कंट्री में. इसने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं और बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है.
तो और जहाँ तक पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, कार्बन क्रेडिट्स की बात कर रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ा है, कैलकुलेट हो रहा है, हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट को कैसे इकट्ठा करके एक रोल पे चलें। Mr. Kumar, my question to you with regards to two-wheeler EV adoption. There's three aspects to adoption. First is marketing, the second is the pull from the customer side, and the third is the push from the government side, right? So I would just want to give you an example. If I have to convince my own grandfather who lives in Lucknow to get rid of his 40-year-old LML scooter and opt for a two-wheeler, electric two-wheeler, how would, in the larger picture, would you be approaching this in the next 5 to 10 years to enhance from the customer standpoint? Because it's a price-sensitive market, right? India is a price-sensitive market. Everything is determined by how much savings am I enhancing if I'm switching to electric. So what is your approach? So see, the first thing is, I think we must congratulate the government, the way the policies have been defined and the push which it has given in the last 2-3 years in terms of FAME 1, FAME 2, whether it was where it was at 30,000 rupees per kilowatt hour, now to 15,000. I think those help which has been given to the industry to bring in a price parity for consumer to switch. I think it's a commendable job. And we've been working very closely with the government in terms of the spend and the investment which the government has done into this. So that's one piece of it. See, the second piece is, as EV manufacturers, if you take our story, we have very deep respect for the petrol industry per se. I come from that industry. It has taken that industry 35-40 years to build good quality product. And the consumer is used to that quality. आज आप चाहे एक्टिवा ले लीजिए, जुपिटर ले लीजिए, सुजुकी का स्कूटर ले लीजिए, I don't remember the name, but वो peacefully वो स्कूटर खरीदता है, and he knows that it will run for 8 years, 10 years, 50, 60, 80 हज़ार किलोमीटर चलता है, and there is no problem with the product. So ultimately, अगर EV इंडस्ट्री को सक्सेसफुल होना है, तो वो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट, उससे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और वो कंज्यूमर जब एक्सपीरियंस करेगा एंड देन ही स्टार्ट यूजिंग दैट अगेन एंड अगेन, दैट इज वेयर इट्स गोइंग टू चेंज. So we believe in two things as an organization in our strategy. First, get your fundamentals in terms of product, quality, reliability, service and spare parts right. मतलब अगर कोई कस्टमर गाड़ी खरीदता है तो उसको स्पेयर पार्ट्स और सर्विस और वो क्वालिटी की गारंटी होनी चाहिए. सो दैट्स वन पीस ऑफ इट. सेकंड थिंग, स्ट्रैटेजिकली वी पीस, देयर इज नो नीड टू कीप द बैटरी एंड द व्हीकल टुगेदर. A time will come, we will push for it ourselves, that ये गाड़ी और बैटरी दोनों अलग चीज़ है. It has to be like a petrol pump and a vehicle. हम लोग पेट्रोल टैंक साथ थोड़ा ना खरीद लेते हैं. So tomorrow when somebody has to buy a scooter, he should be able to buy a very good quality scooter at 60,000 rupees, and he should be able to swap a battery, just come out of the showroom and then pick up a battery, and he should be able to swap. So if you are able to split both of these, then its TCO as well as ownership cost comes down drastically, and then the industry will get to the next stage as it goes along. So these are the two factors on which it will bring in. And the last point is on the e-rickshaw side, जो कि हम काफ़ी undermine करते हैं. E-rickshaw is one of the most competitive industry in this country. And congratulations to all the panelists and यात्री. ये 4-5 कंपनियों ने जिस हिसाब से काम किया और पिछले 20-25 साल में आज 40-50 हज़ार गाड़ी महीने की बिकती है. And the reason for that is at that cost to make a product which runs 3 to 5 years, तो एक साइकिल रिक्शा जो चलाने वाला 200 रुपये कमाता था, आज एक अच्छा सा ई रिक्शा चलाने वाला 1000-1200 रुपये कमाता है. That is the revolution which has already happened in EV, which people undermine or people don't see that. And those are the companies which has a very good chance of success because they know how to manage the TCO, how to produce a good electric vehicles at that given cost. And the consumer will see that as they go along when they start experiencing good quality product. Thank you so much for detailing all of that out. And once again, as we conclude this round, I want to once again thank you and your companies for bringing about an environmental and economic revolution at the same time. It's very rare that we see a product create such a significant impact on the country. And yeah, here's looking to a greener future then. Thank you so much for your time. Can you round of applause for our panelists, ladies and gentlemen?
I would request the panelists to please stay on the stage. I would now request Madhu Suman, Chief Business Officer, Beyond and Z Business, to please come up on the stage and present a small token of appreciation to our set of panelists. A round of applause for our speakers, ladies and gentlemen, who held a very in-depth session on exploring the impact of holistic and electric transportation today's time and how the electric revolution can benefit all of us. A round of applause for our set of panelists, ladies and gentlemen. We have with us Mr. K. Vijay Kumar, Mr. Vijay Kapoor, and Mr. Anupam Batra. A round of applause, ladies and gentlemen, for a set of panelists who held a very in-depth session on the impact of holistic electric transportation and how the revolution in EVs can benefit all of us in today's time. Thank you for being with us today, gentlemen. But don't go anywhere. Stay with us till the end of the event. We have something special for you at the end of the conclave. Well, an entertainment act by Anshu Moore, who has performed at over 700 live events, not just in India, but also overseas. Well, ladies and gentlemen, our last panel discussion for today's conclave will delve upon the battery innovations in the EV revolution and the future of EV batteries. And to discuss this, we have with us a power-packed set of panelists. Please welcome Mr. Haji Kamruddin, founder and managing director, Servacon. Mr. Kamruddin is a passionate industrialist with a vision to transform India's energy and power conditioning sector with reliable solutions. We also have with us Mr. Vishal Kapoor, CEO Energy Efficiency Services Limited. Mr. Kapoor took charge of Energy Efficiency Services after completing his tenure as the Joint Secretary at the Ministry of Power. And we also have with us Vikas Agarwal, co-founder, We Found the Circle. Mr. Agarwal is making tech-enabled community to enable investors meet startups and help businesses generations through connections. And the session will be moderated by Vivaswan Srivastava, co-founder Group V, which is an online new car buying platform. Can we have all of you on the stage? And can we also welcome them with a round of applause, ladies and gentlemen? This is our last session of today's conclave. Stage is all yours, Vivan. Waiting for our third set of panelists, and he's here. The session would now begin. A round of applause for our last session panelists, ladies and gentlemen. Good evening, everyone. Thank you for joining us for the next session. So I'd like to start by talking about the very heart of electric vehicles, which is batteries. लेकिन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बैटरी एक ब्लैक बॉक्स की तरह है बिकॉज इट्स श्राउडेड इन मिस्ट्री नॉट एवरीवन नोज व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स वेदर वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्री इटसेल्फ और द प्रोडक्ट इटसेल्फ कई लोग को रेंज एंजाइटी होती है कई लोग को पता नहीं होता कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है फर्दरमोर जो ये प्रोडक्ट्स आजकल इनोवेट कर रहे हैं ऑल द इनोवेटर्स आउट देयर आर न्यू कंपनीज नाम नहीं सुने हैं तो कस्टमर्स को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं सो आई वुड जस्ट ऑब्वियसली स्टार्ट बाय टचिंग अपॉन सच टॉपिक्स सो मिस्टर हाजी आपसे सबसे पहला सवाल आप 35 साल से इस इंडस्ट्री में हैं यू हैव बीन अ पायनियर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज थोड़ा हमें ये समझाइए कि क्या इनोवेशंस हो रहे हैं बैटरीज में एंड व्हाट कैन वी लुक फॉरवर्ड टू इन द नेक्स्ट 5 to 7 years सर्वोकॉन सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ पे हमें बुलाया पैनल्स में और ये हम कहना चाहते हैं कि सर्वोकॉन पिछले 35 साल से पावर कंडीशनिंग में काम कर रहा है
जिसके अंदर अपना मेनली हम लोग अभी ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रीज में हैं, सर्वो स्टेबलाइजर्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट कर रहे हैं। और अभी स्टार्टिंग हम लोगों ने सोलर के अंदर स्टार्ट किया है, तो अभी सोलर एनर्जी के अंदर भी जा रहे हैं। तो इसलिए अभी हमारा जो मेनली एक्सपीरियंस है वो वोल्टेज से रिलेटेड है, क्योंकि ट्रांसफार्मर्स है, वोल्टेज पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वोल्टेज सब जगह एक जैसी नहीं आती है, कहीं वोल्टेज कम आती है तो कहीं ज़्यादा आती है। उसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, जो हम अभी इंडिया में नंबर 1 हैं और हर तरह से हर जगह के लिए काम कर रहे हैं और वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो अभी अगर हम बैटरीज की बात करते हैं तो बैटरीज में अभी लेड एसिड बैटरीज में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जो मेनली गाड़ियों की यहाँ पे बात हो रही है तो उसके लिए जो लिथियम आयन बैटरी आई है वो अभी स्टार्ट हुई है, तो उसके लिए इसके आगे फर्दर हम इस पर काम करेंगे। तो मेनली हमारा मकसद ये है कि जहाँ भी प्लांट लग रहे हैं, चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं, वहाँ वोल्टेज की जो दिक्कत रहती है उसके लिए एक सर्वोकोन अहम भूमिका निभा रहा है, और उसमें हम जहाँ ट्रांसफार्मर्स या सर्वो स्टेबलाइजर की ज़रूरत रहेगी वोल्टेज को ठीक करने के लिए, उसके लिए हम आगे तत्पर हैं और फ्यूचर में भी इस पर हम लोग काम करते रहेंगे। Mr. Kapoor, I would like to touch upon the most important aspect of this electric ecosystem, which is the public transport. EV buses, right? We've just started seeing these beautiful blue buses. I had the fortune of boarding them a few times as well to commute. Talk to me a bit about what is the next stage in this plan. Well, I think electric buses have arrived now. There was a lot of skepticism earlier about whether big vehicles can achieve the and put your mobile phone. The point of view of environment, I mean, buses are in any case much better. Even ICE buses are much better than most of the road transport vehicles in terms of the footprint on the road, the throughput of the passengers, the reduction in the GHG emissions per passenger. And on top of it now is the layer of electric buses, where the electricity, when it is being moved as a prime mover for the electric buses, I think that is the best we can achieve. Because on Indian roads specifically, I think electric buses need to rule the roost from both the social and financial perspectives. So we at CSL and also my parent company, bringing the electric vehicle revolution in India. We started with the four-wheelers. You know, four-wheelers in 2018, when there were no vehicles in India, we bid out 10,000 cars deploying in the government departments, and we were successful. And today we have a fleet of almost 2,000 vehicles, which is already running with the government departments. And the kudos to the industry, you know, within a period of 6 months that we bid out in 2018, when there were no vehicles in India, 2 manufacturers came out with their designs, and the first generation vehicles got germinated, and the vehicles were running. And now on the electric buses, our company again has adopted the similar model of demand aggregation. 12,000 buses have already been bid out, and they have the bids have been settled, and buses are, you know, coming on the roads as we speak on a daily basis. And again, with the government giving a fillip to this program by announcing another scheme of Prime Minister's e-bus Seva, I think another 10,000 buses are soon to be coming out on the streets as well. So I think electric buses are the way forward, both on the social footprint as well as the environmental footprint, and will with transportation in India, I think committing to almost 12% of the GHG emissions. I think this move towards electric buses will definitely help the India to meet their INDC goals in a big way. Thank you. Mr. Agarwal, my question to you, as a startup guy myself, I eat investors' brains day and night, pitching my ideas to them left, right, center. I'm sure you've been getting a lot of interesting ideas as well from startups.
talk to us a bit about what are the key interest areas in which you are looking to support startups and companies which are working towards building this EV infrastructure. Yeah, so last year we were #1 angel investment platform in India with more than 8 investment only in EV side. We did more than $500,000 worth investment. While we have spent whole day talking about the challenges in general, the biggest challenge is the lack of investment in EV industry. Out of the total investment that VCs have done in India last 5 years, less than 2% is in EV. You cannot have any industry booming only based on some government support or only based on some corporates coming in. That never happens. I also believe that India is losing that opportunity. Nothing against traditional Hero, Honda, nothing against that. But these are the times when new industries boom altogether. IC engine, anybody knows आखिरी बार development हुआ कब था IC engine का? It is 50 years back. आज भी वही spark plug चल रहा है, आज भी वही IC engine चल रहा है, सब कुछ वो चल रहा है. किसी ने सुना है गाड़ी की एवरेज 10 से 25 हो गई हो, स्कूटर की सबने सुना है कि 30 से 80 हो गई. There has been no development, which EV is at the cusp to do that. Can we enable that? And that needs a lot and lot of investment. My belief, apart from all the challenges that we have been discussing, money is the biggest problem that's not flowing in, right from the VC side. Yes, a lot of angels are trying. We ourselves, Madhumita sitting here, we invested our first check in Oban specifically to boom that. But just once they decide to scale 10,000 bikes a month, is the money available? I still see a lot of opportunity and a lot of people sitting here who can get into the bandwagon of that. Mr. Haji, coming back to you, a big concern people have with electric vehicles is that how much. What I was mentioning was that there has been a lot of concern about wear and tear of electric vehicles, right? लोग सोचते हैं कि डीजल गाड़ियाँ या पेट्रोल गाड़ियों को कितना घिस सकते हैं, ये सवाल लेकिन EVs के लिए भी लोग पूछ रहे हैं. बैटरी को अगर मैंने ज़्यादा घिस दिया तो क्या हो गया? If I use that car on a daily basis, will that reduce the life of batteries? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए. हर एक चीज़ के लिए एक अपना साइकिल्स होता है, इसी तरह एक बैटरी का भी साइकिल्स है. उस साइकिल्स को आप जितनी जल्दी ख़त्म कर लेंगे, उस बैटरी की लाइफ भी उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी. तो मेरा मानना यही है कि बैटरी को जितना कम यूज़ करेंगे, या यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसका साइकिल जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी. तो इस तरीके से, और वैसे भी अगर कोई चीज़ चल रही है, वियर एंड टियर है, तो इसको ज़्यादा अगर हम चलाएँगे तो नो डाउट जल्दी ख़राब भी होगी और उसकी जल्दी घिसेगी भी. तो मेरे हिसाब से जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से चलना चाहिए, और वक्त के साथ साथ इसी तरह से भी और इसके अंदर डेवलपमेंट आते रहेंगे. अभी चूँकि हमारे इंडिया के अंदर अभी नया है, इसमें अभी नई स्टार्ट हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसके अंदर बहुत देखने को अलग अलग चीज़ें मिलेंगी. तो उस तरीके से हमें अपने हिसाब से उसको यूज़ करना चाहिए, और अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम समझते हैं बैटरी जल्दी ख़त्म होगी. Understood. So, Mr. Kapoor, coming back to you, I want to obviously talk about something which I read recently, which was EV as a service, which you've been passionately talking about. Just in a few lines, if you could tell me what is the future of EV as a service? Well, I think EV as a service is basically our endeavor to, as was mentioned earlier, is our endeavor to ensure that the market germinates for electric vehicles. So far, being an institution promoted by central power sector undertakings, what we had done initially to disrupt the market was to, as I said, we bid out 10,000 vehicles outside, and so that the vehicles start coming in the market. That was 2017-18. Now we are standing in 2023, where you can see a large number of vehicles automatically running. Having said that, I think the car rentals, more or less car rental services, car leasing services, are still not adopting electric vehicles in a big way. This is our endeavor to aggregate demand across all states. We launched this EV as a service, about a month back in G20 in Goa, and we have started aggregating demand. And I think
have already aggregated almost 1,200, 1,500 vehicles in the last 20 to 3 weeks that we have launched this program. And we are going to bid it out and allow the private operators and leasing companies to deploy these vehicles with us, and we in turn will deploy it with the various state governments and other undertakings. So this is our endeavor to ensure that the market starts picking up the electric vehicles and four-wheelers. Mr. Agarwal, again, since you interact with a lot of young companies, a lot of young innovators, talk to us a bit about what have you seen on the international level where you feel that India needs to catch up when it comes to EV-related innovations. Okay, so no comparison, though I keep traveling outside. But 2 points I would like to highlight. One, everybody keeps, and that may be very deceptive, everybody keeps saying charging station चाहिए, बहुत सारे बनने हैं. To be fair, मुझे तो समझ नहीं आता, every house is a charging station. You need a charging station, maybe in a society that's okay because you can't have a wire from 14th floor. In electricity, every house is a charging station. Anyways, आप चार्जिंग स्टेशन पे जाते हैं, 1 घंटे में वो 15-20 किलोमीटर जितना चार्ज होता है. It's not petrol or diesel that you are charging for 500 kilometers. So at the max, what you are charging is a backup कि ऑफिस से घर आते हुए बीच में रुक गई तो 10 किलोमीटर मैं चला लूँ. That's not how EV will ever work in any society for that matter. People also keep saying गाँव में क्या होगा, वहाँ तो बिजली नहीं आती. अरे यार ठीक ठाक इंडिया चल रहा है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड ऑल द ग्रोथ. इतनी बिजली तो आती है कि पूरी रात में वो एक आपकी गाड़ी चार्ज हो जाए. So I think first of all, when you compare with global scenario, the volume that we can get into, you have almost like 80 cities in India, which is 1 million population, which is more than most of the countries in Europe. So the amount of sales that you can do, amount of infrastructure that you can do is humongous. That's number one. Number two, while we keep talking about the cost of vehicle, nobody ever says कि EV की वजह से जो pollution कम होगा, जो कार्बन क्रेडिट हैं, मैं उसे लेकर के सब्सिडाइज करके व्हीकल की कॉस्ट कम करता हूँ, उसे सब्सिडी कर देता हूँ. Nobody is talking about that. I don't know. That's an industry altogether. I am investing in 2 such companies which are into carbon credits only. So for every ton of credit, every ton of saving of CO2, it's one credit which is $40 to $80 in international market. Even if you are saving that and 2,000 rupee per car per month, अरे आपकी EMI निकलने लग जाएगी थोड़े दिनों में. People are not talking on that. Everybody is talking on the challenges. इसका क्या होगा, उसका क्या होगा. On charging side, while I am saying कि charging station मुझे लगता नहीं कभी काम होंगे, there may be battery swap station. क्योंकि मुझे तो instant battery चाहिए, मुझे तो instant 500 किलोमीटर जाना है. I'm not there to wait for half an hour with my family to charge for 10 minutes. ऐसा कभी भी हो ही नहीं पाएगा growing economy में. That's my perception. I would be happy to be wrong in 5 years. अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा. So these are 2 benchmark where you can disrupt as compared to anywhere in the world. And as Gadkari ji said, not only will you save on carbon credit, you will also save on a lot of imports that you are doing, 16 lakh crore worth of diesel and petrol that you are importing. So that's a double benefit that India can do that nobody has that power. Are we ready for that? Is somebody looking at disruption? पूरी शाम हम बात सिर्फ गाड़ियाँ ज़्यादा कैसे बनेंगी यही बात कर रहे हैं या वो बैटरी कैसे चलेगी वही बात कर रहे हैं. I think somebody need to think on those lines and that's a big market. Well, thank you so much to all 3 of you for your inputs. I'm sure it's taken the fear out of most of the mysteries around the electric vehicle space. चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो public transport हो, चाहे वो हो जो कौन-कौन सी companies आने वाली हैं हम लोग को electrify करने के लिए. So on that note, thank you so much for joining us and thank you everyone for tuning in for this session. I would request our speakers to please stay on the stage. I would also request Mona Jain, Chief Revenue Officer, Zee Media Corporation Limited, to please come up on the stage and present a small token of appreciation to our speakers. A round of applause for our last set of panelists, ladies and gentlemen. They delved upon the battery innovations in EV revolution and the future of EV in India. Can we have a round of applause for Mr. Kamruddin, Founder and Managing Director, Servacon, Mr. Vishal Kapoor, CEO, Energy Efficiency Services Limited, Vikas Agarwal, Co-Founder, We Founder Circle, and also our moderator, Vivaswan Srivastava, Co-Founder, Group We. A round of applause for our last set of panelists, ladies and gentlemen.
They held an in-depth session upon the battery innovations in EV revolution and the future of EV in India in today's time. Thank you for being with us today and holding that very engaging session. I would now request Mona Jain, Chief Revenue Officer, Zee Media Corporation Limited, to wrap up today's event. So I guess all of us had a very electrifying event today. I think I have learned a lot. I had actually a written note on the, the closing, but I just thought probably just share what I was feeling today when the event was going on. In fact, when we conceptualized the event, we thought it was a very simple one. You have two-wheeler electric vehicles, you have four-wheeler electric vehicles. But once we went along with this, it is not an easy business at all. And I'm so happy to see so many youngsters really part of this entire industry and all that they're doing. And especially, kind of pursuing the SDG goals, of the government of the country, really pursuing the sustainability, objectives. So thank you very much, everybody. I would want to kind of take some time to kind of, really thank, firstly, our partners, Sarah, Servocon, Migos, Evazon, Arzu, AP Mill, and CL Bajaj. I would want to kind of really thank all our very, very esteemed panelists. Thank you so much for really coming, taking time to kind of participate in the event. A very, very warm thank you to all of you, to our moderators who really kind of spent time to kind of get the questions right and made the conversation and the panels very, very engaging, very interesting. Thank you so much, for all of that. And obviously, our very enlightened, Honorable Nitin Gadkari ji, who always kind of ensures, that we have a very, very interesting and a very, very engaging conversations, and we always learn something new whenever he's there on stage, and he's talking to us. And the Minister, Mr. Gehlot, again, very insightful. We really understand the pain point of, what he's probably is going through in his circumstances. So thank you very much, everybody. Thank you to my entire team. We have had 1 month of good, grueling time, trying to put this event together. So I think each one of you, thank you so much for all your contribution. Sales team, marketing team, editorial team, production team, execution team, thank you so much for all your efforts. Thank you everybody for being here. Thank you. Well, we've not only reached the end. Please hold on to your seats for a laughter ride. Please welcome Mr. Anshu Moore, who has performed at over 700 live shows in India and abroad, and we can vouch that there will not be a single dull moment with our funny man. The stage is all yours, Mr. Moore.